أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. सदकल्लाहुल अज़ीम। बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, आप में से कोई एक दो अपने हैंड रेस कर दें ताकि आई एम श्योर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहनीला, डॉक्टर महविश एंड ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट एंड I welcome you all to yet another seminar, which is seminar 7 और मेरा नाम डॉक्टर हुदा शुएब है। I am the campus director and registrar at Global Institute of Human Development, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी। प्लस मैं डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल डॉक्टर साहिबान जिन जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर्स में उसको लिखें एंड वील एड्रेस इट टाइमली। सो बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड और मैं रीकैप की तरफ जाऊं, एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी कि आई डिस्कस इन द स्टार्ट ऑफ द सेमिनार, और ऑब्वियसली रिमाइंडर के तौर पे आई टेल यू अगेन एट द एंड ऑफ द सेमिनार, क्योंकि बास पार्टिसिपेंट्स किसी भी कमिटमेंट की वजह से एंड तक नहीं जाते और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स उनसे मिस हो जाती हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट ये कि अपने फीडबैक फॉर्म को रेगुलरली फिलअप करें, इसकी मार्किंग है। फीडबैक फॉर्म्स में के नंबर्स में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एंड इंडिकेशन। सो आप लोग जैसे ही अपना पोस्ट सेमिनार क्विज हमें सबमिट कराते हैं, साथ साथ फीडबैक का जो फॉर्म है उसको भी रेगुलरली हमें सबमिट कराएं। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और वो इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखती है क्योंकि आपको पता है कि जो हम आगे रिसर्च प्रैक्टिकम कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब डॉक्टर्स के ग्रुप्स बने हुए हों, ताकि 162 एज अ होल देखने के बजाय हम सेपरेट ग्रुप्स डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करें केस लॉ के हवाले से। तो उसमें हमें इन टोटल तकरीबन 17 से 18 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वो किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उनको कहाँ पे जो है वो अकोमोडेट किया जाए। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स और डॉक्टर साहिबान ने अपनी लोकेशन ऐसा हमारे साथ शेयर नहीं की है, ना ही हमें अपनी प्रेफरेंस बताई है। तो हम लोगों ने चूंकि ये चीज़ जनवरी में स्टार्ट करनी है, केस लॉग्स को डिस्कस करना, आपके ग्रुप्स बनाना, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों के ग्रुप्स बने पहले। तो जिन डॉक्टर लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस नहीं बताई हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई इशू आता है, तो इवन आप आज चैट में लिख सकते हैं कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको इस सिटी के ग्रुप में डाला जाए। इवन इन चैट ऑल्सो आपका हमारे साथ आज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो नंबर है वो ऑलमोस्ट हर डॉक्टर साहब के पास है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ हमें टाइमली हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि हम आपके ग्रुप्स बना सकें। तो आई थिंक इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेमिनार ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको कम्युनिकेट हो गई हैं। एक तो अपना फीडबैक फॉर्म हमें सबमिट कराएं विद पोस्ट सेमिनार क्विज के साथ, और दूसरा ये कि अपनी प्रेफरेंस हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपकी ग्रुपिंग कर सकें। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर regarding these 2 points, and let's proceed forward. गोइंग ऑन टू द ब्रीफ रिकैप ऑफ द लास्ट सेमिनार, आपको पता है कि जो हमारा लास्ट सेमिनार था वो था असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये सेमिनार प्रोफेसर डॉक्टर फरीद मिनहास ने बहुत अच्छे तरीके से आप सबको डिलीवर कराया होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के मैं मार्क्स भी देख रही थी तो माशाल्लाह सबके पोस्ट सेमिनार क्विज में बहुत अच्छे नंबर आए हुए थे। तो दिस इंडिकेट्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें कॉमन प्रेजेंटेशंस थी, और अगर हम कॉमन प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमें इन द स्टार्ट ऑफ द सेमिनार, या जब हमने सुसाइड और सेल्फ हार्म की बात की थी, तो उस हाथ को अपने जहन में लाना चाहिए जिस पे सर ने तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाए थे, और वो एक हाथ पड़ा हुआ था बेबस सा, जिसके रिस्ट पर एक बैंडेज बड़ी हुई थी और उस पर हेल्प लिखा हुआ था। तो उस हेल्प की जो स्टोरी थी वो डॉक्टर फरीद ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, और यही चीज़ें कॉमन प्रेजेंटेशंस में भी लिखी हुई हैं जिनको आइडेंटिफाई करना एक जीपी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो वो डायरेक्टली आपको आके नहीं कहता कि जी मैं खुदकुशी करने वाला हूँ या मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला हूँ, जबकि अर्ली स्टेज पर आपको
कुछ ऐसे साइंस नजर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चीज को आगे से बचाने के लिए, जिसमें एक्सट्रीम होपलेसनेस आ जाती है और डिस्पेयर आ जाता है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना कि उसकी करंट थॉट्स क्या चल रही हैं दिमाग में, उसके प्लान्स क्या हैं। और वो ज़ाहिर बात है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही आते हैं। और आप लोग चूंकि स्ट्रेंथ है कम्युनिटी का, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन आपका स्टूडेंट्स के जितने भी पेशेंट्स आते हैं आपके साथ ही होता है। और वो आपको अपनी सारी हिस्ट्री एज अ बुक खोल के, जिनके साथ अच्छी रेपो बनी हुई होती है, बता देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके थॉट्स, उनके प्लान्स, क्या उन्होंने कभी फ्यूचर में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या कोई हिस्ट्री जो वो आपको बताएं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें जो सेल्फ हार्म जिससे अपने आप को वो कर सकते हैं, जैसे पॉइजनिंग, इंटॉक्सिकेशन, कोई ब्लीडिंग, आपको लगे कि कोई जख्म हुए हैं या अपने आप को काटने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेथार्जी भी कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं उन पेशेंट्स की जिनको इनिशियली सुसाइड या सेल्फ हार्म के थॉट्स आते हैं। राइट, तो वी मूव टू दी असेसमेंट। और असेसमेंट से भी अगर आप पिछली अपनी स्लाइड्स में रिकॉल करें तो आपके जहन में ये बात आएगी थी कि डॉक्टर फरीद ने कहा था कि एवरी डॉक्टर शुड बी एबल टू असेस द रिस्क ऑफ सुसाइड। तो हमारा ये काम है कि हम जो सुसाइड से रिलेटेड रिस्क हैं उनको टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम बीइंग फैमिली फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर्स, इस तरह के सवाल उनसे पूछें जिससे हम उनकी थॉट्स तक आराम से पहुंच सके। हम डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप अपने आप को मारना तो नहीं चाह रहे, या आप कोई ऐसी जहन तो नहीं में सोच रखते कि जिससे आपको लगे कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रहे हैं। बल्कि बड़ा अच्छा सर ने कहा था कि बड़े हम्बल तरीके से आप पूछते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी के पीरियड से गुजार रहे हैं, और मुझे पता है कि इस तरह की सिचुएशन में जो और लोग होते हैं उनको ये लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है, या उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो क्या आपके जहन में भी इस तरह की कोई सोच आती है? तो ऑलवेज हमें इसी तरह की बातों को अपने अल्फाज में रखना चाहिए जिससे पेशेंट हर्ट भी ना हो और उन तक हमारा मैसेज भी पहुंच जाए, और वो क्लियरली हमें अपनी इंटेंशंस और अपनी थॉट्स के बारे में बता सके। असेसमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास हिस्ट्री क्लियर हो, आपको पता हो कि आपका डायग्नोसिस क्या है। और दूसरा ये कि आप इंडिविजुअल्स की मेंटल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड। इसमें मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी आ जाती है, मूड की असेसमेंट आ जाती है, और असेसमेंट ऑफ सुसाइडल इंटेंट जो कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आपके सामने आएगी, और जो कॉमन प्रेजेंटेशंस हमने पहले डिस्कस किए हैं वो। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फर्स्ट डिसीजन होना चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो ये होना चाहिए कि हमने पेशेंट को एडमिट तो नहीं करना जिसके सिम्टम्स बहुत क्लियरली आपके सामने आ रहे हो। या तो आप उसको एडमिट करेंगे या उसको एज एन आउट पेशेंट ट्रीट करेंगे और उसको फॉलो अप में रखेंगे। ये डिपेंड करता है कि सिवेरिटी क्या है आपके जो सिम्टम्स हैं पेशेंट्स के, साइकोटिक इलनेस की सिवेरिटी क्या है, उसमें इंटेंसिटी कितनी है सुसाइडल आइडिएशन की, और उसके पास कोई सोशल सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। इसके आगे आपको ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो प्रोटोकॉल्स है जिसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रीटमेंट जो है वो करनी होती है। पहला जिस तरह ये लिखा हुआ है कि मेडिकली सीरियस एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म, तो इसमें जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो ये कि पेशेंट जो है वो सिक्योरली प्लेस्ड हो, उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट उसको दी हुई हो। ऐसे पेशेंट्स को मैनेजमेंट में है कि इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इनको पॉइजनिंग का इनके साथ कोई सिनेरियो है, पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, तो आपको मेडिकली उसको इंजरी को और पॉइजनिंग को ट्रीट करना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ दीज पेशेंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हॉस्पिटल केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनको केयर की सपोर्ट जो है वो ऑफर करनी चाहिए, साइको सोशल सपोर्ट इनको एक्टिवेट करनी चाहिए इनके साथ, और मेडिकल या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में रेगुलर फॉलो अप। तो ये नीचे जितने भी प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं इन सब में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। अगर हम इमिनेंट रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म या सुसाइड की बात करें, हम रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म की बात करें, या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है,
पेशेंट को साइको सोशल सपोर्ट है, केयर की सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की उसकी कंसल्टेशन होनी चाहिए, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसका फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप में भी जो बात उन्होंने लिखी हुई है हमारी स्लाइड पे जो आपको शो हो रही है वो यही है कि एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफरिंग रेगुलर फॉलो अप केयर टू इंडिविजुअल्स विद हिस्ट्री ऑफ सुसाइड और सेल्फ हार्म। ये हाथ जो है ये आई थिंक आप सबको अब याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीटेडली हमने इस पे क्विजेस में पूछा हुआ भी है। तो मेन चीज यही है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ पेशेंट सिम्टम्स आप उसको साइको एजुकेट करेंगे, आप ट्रीट करेंगे एनी कॉन्करेंट एमएनएस कंडीशंस, कोई क्रॉनिक पेन या इमोशनल डिस्ट्रेस अगर उसको है, ऑफर एंड एक्टिवेट साइको सोशल सपोर्ट, support the carers or care for create a safe environment for the person with self harm or suicide। और अगर इन सब चीजें करने से नहीं फायदा होता है तो यू रेफर द पेशेंट टू अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। जी, आई होप रिकॉल आपको हो गया होगा पिछली स्लाइड्स का जो हमने जिसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, जो हमने पिछले सेमिनार में चीज़ें कवर की थी। लेट्स कम ऑन टू दिस समरी ऑफ अटेंडेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ द पोस्ट सेमिनार क्विज। हमारे जो टोटल एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो 162 हैं। पिछले सेमिनार में तकरीबन 102 लोगों ने शिरकत की थी, और प्री और पोस्ट असेसमेंट जो है वो सिर्फ 75 लोगों ने सबमिट कराई है। इनिशियली इन बिटवीन अटेंडेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, अभी भी अच्छी है, लेकिन ये उस तरह की नहीं है जिस तरह हमें चाहिए। हमें 100% अटेंडेंस चाहिए, और आपकी अटेंडेंस पूरी होगी तो आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी होगी, हम इन आपके ग्रुप्स बना सकेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, डिस्कशन अच्छी होगी, आपके साथ सुपरविजन अच्छी होगी। सो वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई टीम, टू try to take these seminars religiously, please। अच्छा जी, रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट पोस्ट सेमिनार असेसमेंट एंड एड्रेसिंग पार्टिसिपेंट्स क्वेरीज। आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि जिस ईमेल एड्रेस से आप हमें अपने सेमिनार्स जो हैं वो सबमिट कराते हैं, आपके रिजल्ट्स भी उसी ईमेल एड्रेस पे आते हैं। आप का गूगल क्लासरूम में जिस ईमेल से रजिस्टर हैं, आप उसी के ज़रिए इस क्लासरूम में लॉग इन हो सकते हैं, उसी के ज़रिए आपको केस लॉग एक्सेस हो सकता है, उसी के ज़रिए आप प्री पोस्ट सेमिनार क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दीज क्विजेज वाज वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगी, और डॉक्टर अज़का, आई होप कि मैं आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूं जो आपने हमें क्लासरूम में भी क्वेश्चन किया हुआ था। क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड अमंग ओल्डर पीपल। इसमें आप चार ऑप्शंस देख रहे हैं: ड्रग मिसयूज, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो अगर आप सेल्फ हार्म और सुसाइड को थोड़ा सा रिकॉल करें और पिछली स्लाइड्स में देखें भी, तो हमने ये बात की थी कि 90% पेशेंट्स को डिप्रेशन किस लिए होता है, जिनको कोई मेंटल हेल्थ का कोई इशू होता है या प्रॉब्लम होती है। अगर ओल्डर पेशेंट्स की भी हम बात करते हैं तो सोशल आइसोलेशन अगर आपको पता है तभी होगी जब पेशेंट डिप्रेस्ड होगा, और उससे पहले अगर उसको एंजाइटी होगी वो डिप्रेशन में चला जाएगा तो अपने आप को सोशली आइसोलेट करेगा। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और ड्रग मिसयूज ये सारी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है ना वो डिप्रेशन ही है। तो इसका करेक्ट आंसर डिप्रेशन है, सोशल आइसोलेशन नहीं है, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पहले भी और पोस्ट सेमिनार क्विज में भी इसी को रेफर किया हुआ है। तो आई होप दिस एड्रेस योर क्वेरी डॉक्टर अस्का, और वो बाकी लोग जिनको लग रहा था कि ये क्वेश्चन सोशल आइसोलेशन इसका आंसर होना चाहिए था, तो इसका आंसर डिप्रेशन ही है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टू डिस्कशन एंड कमेंट्स, और मैं रिकॉल करती जाऊँ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने स्टार्ट में की थी कि फीडबैक फॉर्म्स आप हमें लाजमी सबमिट कराएं। इसकी मार्किंग है जिस तरह आपकी अटेंडेंस और आपकी प्री एंड पोस्ट सेमिनार को इसकी मार्किंग होती है उसी तरह ही। और थैंक यू सो मच उन डॉक्टर साहिबान का कि जो सेमिनार होने से पहले टाइमली इन्फॉर्म कर देते हैं अपनी पर्सनल कमिटमेंट के लिहाज से कि वो अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अटेंडेंस के लिहाज से हम जो चीज़ मेंटेन कर रहे होते हैं बैक एंड पे हमारे पास होती है एक वैलिड रीज़न। जो लोग नहीं अटेंड करते और बताते भी नहीं हैं तो वो एब्सेंट मार्क होते हैं, और उसका मतलब है कि उनकी मार्किंग और जो फाइनल एग्जाम्स में वेटेज है परसेंटेज के लिहाज से वो कम हो जाएगी। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो ये थी कि आप लोगों के ग्रुप एलोकेशन हमने स्टार्ट करानी है जनवरी में,
और हमारे पास तकरीबन 17 से 18 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस शेयर की है। और एक डॉक्टर साहिबा ने अपना ग्रुप पूरा शेयर किया था, 10 एक डॉक्टर्स थे उसमें। थैंक यू सो मच, मैं आपका नाम भूल गई हूँ। सो जो भी मुझे सुन रही हैं डॉक्टर साहिबा जिन्होंने अपना ग्रुप में साथ शेयर किया था, तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, और शायद ये लोग कंबाइन स्टडी आपस में करते थे तो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी एंड दे प्रेफर कि इन सब लोगों को एक ही ग्रुप में रखा जाए। इसलिए आपकी प्रेफरेंस, आपकी ईज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे सेम सिटी, फॉर एग्जांपल मुल्तान लाहौर में अगर डॉक्टर्स आप एक दूसरे को जानते हैं और आप सेम ग्रुप रखना चाहते हैं, तो काइंडली इंडिकेट अस विद योर नेम, विद योर एरिया, विद योर सिटी, कि आप इकट्ठे जो है वो अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें हम केस लॉ को डिस्कस करें और आगे जो सुपरविजन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सके। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपनी लोकेशन हमारे साथ जो हमने आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया था, मैं आज दोबारा शेयर कर दूंगी, जिन लोगों ने उसको फिल आउट नहीं किया वो उसको फिल करके भेजें। प्लस कुछ ऐसे डॉक्टर्स लोग भी हैं, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स, जो कि अभी कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने भी हमें बताया कि अभी वो क्लिनिकली कहीं पे भी काम नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए भी वी आर थिंकिंग सम वे आउट कि हम इनको एक ग्रुप में कर दें और इनको किसी एक जगह अरेंज कर दें जहां पर आकर ये केसेस को देख सकें और उसका डाटा हमारे साथ शेयर कर सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि कौन लोग ऐसे हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसके अलावा जिन लोगों ने गूगल फॉर्म फिल आउट नहीं किया हुआ, उसका लिंक आज दोबारा हम आपके साथ शेयर कर देंगे, उसको फिल करें, हम तक सबमिट कराएं। कोई इशू है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो अपना नाम और अपना सिटी वाइज लोकेशन अपने जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें लिख के भेज रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन कि जिन्होंने नहीं लिख के भेजा हुआ वो हमें चैट में लिख के भेज दें, हमारे पास डेटा आ जाएगा और हम आप लोगों को ग्रुप्स में करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी अपनी कोई प्रेफरेंस है तो वो भी हमें लाजमी आप बता दें, इधर ही लिख दें, हम उसको जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। जी, डॉक्टर शुएब खान साहब, आपकी जो भी क्वेरी है आप प्लीज उसको Q&A सेक्शन में लिख दें। जी, तो आज की जो हमारा सेमिनार है दैट इज असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स। आई एम श्योर कि आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखते होंगे। और जो हमारा आज का सेमिनार है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो हम इसमें से क्या चीज़ें सीखेंगे। We will be able to learn the core symptoms and common presentations of bipolar disorder and its impact, understand how to perform assessments for bipolar disorders, recognize when and how to manage a person with bipolar disorder, self-harm or suicide, outline the initial treatment for bipolar disorders, and learn how to plan and perform follow-up for bipolar disorders. Ji, so outline of today's training seminar is: first we'll proceed with the introduction, then we'll go to the assessment, then the management, and we'll take a 10 minutes comfort break after that. Then we'll again continue with follow-ups, and then we are going to have Q&A sessions. And in the end आप लोगों का जो है वो हमें रिस्पॉन्स का बेसब्री से इंतज़ार होगा। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास शाम का टाइम फ्री है तो लॉग आउट करने से पहले आप अपने पोस्ट सेमिनार फीडबैक और पोस्ट सेमिनार क्विज जो है उसको करके हमारे पास सबमिट करा दें। लेकिन वी आर स्टिल गिविंग यू टाइम टिल 1 p.m. 10th of December, संडे, टुमारो। जी, तो डियर डॉक्टर्स, वी विल स्टार्ट इन 15 minutes। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना जो लोकेशन का फॉर्म है उसको फिल आउट करें।
विद इन 2 मिनट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और जो आपका चैट है उसमें भी उसका लिंक जो है वो डॉक्टर जिले आपके साथ शेयर कर रही हैं। सो आप उसको जो है इन द मीन टाइम जिन्होंने नहीं उसको फिल आउट किया हुआ उसको फिल आउट करें और हमें अभी सबमिट करा दें। जी डॉक्टर आयशा, आई वुड लाइक टू एड्रेस योर क्वेरी। ये इसीलिए हमने आप पे छोड़ा हुआ है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप चाहती हैं कि आपका सेम सिटी में ही ग्रुप बने तो दैट इज ऑल्सो ओके विद अस। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप किसी और सिटी में जा रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं और वहाँ पे आपका ग्रुप होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो ओके विद अस। तो ये प्रेफरेंस इसलिए हमने आपके पास छोड़ी है। जी डॉक्टर जावेद अयूब, आपका मुझे मैसेज आया है कि प्लीज पुट मी इन डॉक्टर जावेद इकबाल एंड डॉक्टर फैसल वदूद्स ग्रुप। तो डॉक्टर जावेद मुझे ये बता दें कि किस सिटी से हैं, काइंडली आप वो भी मेंशन कर दें। डॉक्टर जावेद इकबाल जी। जी डॉक्टर नूरा, अगर आप लाहौर में हैं और आपकी प्रेफरेंस लाहौर ही है तो वेल एंड गुड। जिन लोगों का हमारे पास डाटा आ चुका है और वो किसी ग्रुप में नहीं है और वो लाहौर से ही हैं, तो हम उनको आपके ग्रुप में एडजस्ट कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे पास आप लोगों की सिटी वाइज लोकेशन और आपकी प्रेफरेंस आ जाए। तो अगर आप लोग के पास खुद कोई डॉक्टर्स ऐसे नहीं है जिनके साथ आप ग्रुप बना चाहते हैं तो वील अकोमोडेट यू। जी डॉक्टर ख्वाजा, थैंक यू सो मच। आपने अपनी प्रेफरेंस बताई है गुजरात या लाहौर। सो इन दोनों में से आप किसी भी एरिया में फीजिबल हैं आपकी। चलें, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। जी एक एनोनमस हमें मैसेज आया हुआ है कि आप लोग शायद रिमोट एरिया में हैं। जो भी डॉक्टर साहिब है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ और आप किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते और आप ये चाह रहे हैं कि ये ऑनलाइन हो। तो जी डॉक्टर साहिब या डॉक्टर साहिबा, ये वर्चुअली ही होगा, इन पर्सन नहीं होगा। लेकिन हम सेम ग्रुप इसलिए कर रहे थे ताकि बाज दफ़ा होता है कि अगर आपको इन पर्सन सुपरविजन किसी जगह पे चाहिए तो आप इन पर्सन भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसलिए हमने सेम ग्रुप्स में रखा था। आप प्लीज़ अपना नेम मेरे साथ शेयर करें, जो कि एनोनमस से एक हमें रिप्लाई आया हुआ है गूगल उसमें। जी डॉक्टर ताहिर, आई थिंक इट्स मोर प्रोडक्टिव टू जॉइन डॉक्टर्स ग्रुप फ्रॉम द सेम सिटी। क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आप किसी दूसरे सिटी के डॉक्टर्स के साथ ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक इंटरेक्शन में हो सकता है कुछ इश्यू हो जाएगा। इन पर्सन अगर आपने एक दूसरे के साथ मिल के किसी पेशेंट को देखना है या डिस्कस करना है तो वो एक चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है। लेकिन आई वुड प्रेफर कि अगर आपकी सेम सिटी है तो सेम ग्रुप विल बी मोर इजी फॉर ऑल ऑफ यू।
ऐसे डॉक्टर साहिबान जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा हमें इंडिकेट कर दें कि वो पाकिस्तान कब अवेलेबल होंगे। जैसे डॉक्टर शुएब हैं, वो लिख रहे हैं कि आई एम इन सऊदी अरेबिया। तो मैं जो हूँ वो उसको कैसे करूँ? तो आप मुझे काइंडली बता दें कि आप पाकिस्तान कब आ सकते हैं। वैसे तो ये है कि वो वर्चुअल ही होगा, सो वर्चुअली आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जी डॉक्टर शाजिया, हमारे पास दो चार और ऐसी फीमेल डॉक्टर्स हैं जो कि अभी कहीं क्लिनिकल काम नहीं कर रही हैं। तो वेल नोटेड, तो वील सॉर्ट दिस इशू आल्सो। तो यू आर फ्रॉम लाहौर, सो वील कंसिडर यू इन लाहौर ग्रुप। जिन डॉक्टर्स ने पहले से अपना लोकेशन वाइज गूगल फॉर्म हमें टाइमली सबमिट कराया हुआ है, प्लीज़ वो आप दोबारा ना करवाएं। जिन्होंने नहीं किया हुआ, हमारे साथ लोकेशन नहीं शेयर की हुई, वो जो है वो हमारे साथ अभी शेयर कर दें। और थैंक यू डॉक्टर रोजीना, यू आर फ्रॉम कराची एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एज सोनोलॉजिस्ट, सो इज़ इट पॉसिबल टू अकोमोडेट मी? जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वील ट्राई टू कीप यू इन कराची ग्रुप इफ़ इट्स फिजिबल फॉर यू। जी डॉक्टर रबिया, आपने मैसेज किया हुआ इन पर्सन आने का, सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो अबाउट योर अवेलेबिलिटी। और मोस्टली जो है ये वर्चुअल ही होगा, लेकिन अगर कभी ज़रूरत हुई तो वील लेट यू नो। लेकिन अभी ये वर्चुअल ही है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब लोग प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं और सबके लिए एक टाइम पे इकट्ठे होना इज़ अ बिट चैलेंजिंग। सो लेकिन व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, सो विल कीप यू अपडेटेड इंशाल्लाह। जी डॉक्टर फायजा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो अबाउट योर रेजिडेंसी। आप पिंडी से हैं, सो इंशाल्लाह वील कीप यू इन रावलपिंडी इस्लामाबाद ग्रुप। और वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे पास 73 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास प्री सेमिनार क्विज जो हैं वो 60-61 के करीब हैं। सो जब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गो टू योर गूगल क्लासरूम और अपने प्री सेमिनार क्विज को जल्दी से अटेम्प्ट करें और वापस आएँ। थैंक यू डॉक्टर अहमद फॉर लेटिंग मी नो। सो आप अब प्लीज़ ये रिकॉर्डेड सेक्शन जो हमारे साथ हमारा सेशन होगा शेयर गूगल क्लासरूम में, उसको आप देखिएगा और उसको देख के जो है यू ट्राई टू सॉल्व द पोस्ट सेमिनार क्विज।
जी, डॉक्टर सदफ़ इज़ फ्रॉम रहीम यार खान, और डॉक्टर सदफ़ की क्वेरी ये है कि उन्होंने लास्ट टाइम देखा था कि एक और हमारे कोई डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहिब हैं जो कि रहीम यार खान से हैं। तो वो भी अगर हमारे साथ हैं तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर दें ताकि डॉक्टर सदफ़ और उनको जो है वो हम सेम ग्रुप में रख सकें। तो इफ़ एनीवन एल्स इज़ फ्रॉम रहीम यार खान, प्लीज़ मैसेज मी सेपरेटली। जी, डॉक्टर साजिद एंड डॉक्टर अबू बकर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो आप दोनों रहीम यार खान से हैं। तो वेल नोटेड जी, फिर अब हमारे पास 3 डॉक्टर्स हो गए हैं रहीम यार खान से। तो विल कीप यू इन द सेम ग्रुप। जी, डॉक्टर आयशा, आपकी क्वेरी है कि आपको नहीं समझ में आ रही कि ग्रुप में क्या एक्टिविटी होनी है। असल में जो आपको पहले भी सेमिनार में बताया हुआ था कि हमारी जो मेन इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ को अलग से इंटीग्रेट करने का मकसद था वो यही था कि हम जीपीस को जितनी भी कम्युनिटी सेटिंग में पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिहाज से उनको ट्रेन कर सकें। तो उनकी ट्रेनिंग 162 लोगों की एज अ होल मुमकिन नहीं है। इस लिहाज से हमने सोचा है कि आपके जितने भी आप 162 लोग हैं उनके हम लोग 5 से 6 या 8 ग्रुप्स बना दें। उस ग्रुप में जितने भी 20-25 लोग आते हैं उनके साथ हम अलग से केस लॉग्स को डिस्कस करें। आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले सेमिनार्स में भी आप लोग अपने इंडिविजुअल पेशेंट्स के केसेस को डिस्कस कर रहे होते थे कि मेरा पेशेंट ये है, इसको ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ये मेडिसिन दे रहा हूँ या मैं इसको क्या दूंगा, उसकी डोजेज को कितना एडजस्ट करना है। तो ये हम क्वेश्चंस इंडिविजुअल बेसिस पे डॉक्टर्स के नहीं एड्रेस कर सकते। ग्रुप्स बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों की केसेस की डिस्कशन हो हमारे सुपरवाइजर्स के साथ, जो हमारी फैकल्टी है आपको सेमिनार्स डिलीवर करा रही है उनके साथ, और वो जो है वो आपको सुपरवाइज करें, आपको असिस्ट भी करें, आपको गाइड करें। और दूसरी बात ये कि जो आप हमें केस लॉग्स भेज रहे हैं अलग से क्वेश्चन को फिल आउट करें, आइडेंटिफाई करें कि एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स कितने हैं, आपने उनको क्या इंटरवेंशन दी है, वो ठीक दी है, आपका फॉलो अप ठीक हो रहा है। ये सारी डिस्कशंस आपके ग्रुप्स में होंगी। वो हम इस एक सेमिनार में 162 लोगों को इकट्ठे नहीं करा सकते। तो ग्रुप्स बनाने का मकसद ही यही है डॉक्टर आयशा। आई होप दिस इज क्लियर। डॉक्टर शाजिया, मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है गूगल फॉर्म का। तो ये वाला है काइंडली। और अगर आपको इसको ओपन करने में और डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी चैट में भी देख सकती हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी किस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं और आपकी सिटी वाइज लोकेशन क्या है।
जो गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर हुआ है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि उसमें आपको अपनी लोकेशन एंटर करनी है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लोकेशन शेयर करने से हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे जो आप चैट में लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं कि आप किस सिटी से हैं, लेकिन जो गूगल फॉर्म है उसमें लोकेशन लाजमी अपनी ऐड कीजिएगा कि आप किस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी डॉक्टर राबिया, आपने लिखा है कि काइंडली ऐड मी इन द ग्रुप ऑफ डॉक्टर सरीता, हाईली ग्रेटफुल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर राबिया। आई होप आप लोगों को गूगल फॉर्म एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपको जो अपनी लोकेशन है उसको गूगल मैप से लाकर फॉर्म में पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वी आर राइटिंग अ टेक्स्ट कि आपको समझ आ जाए। तो वो हम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं और इस चैट में भी शेयर कर देते हैं। सो यू विल बी एबल टू गेट योर लोकेशन वे यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द गूगल मैप एंड कैन पेस्ट इनटू योर गूगल फॉर्म। जी डियर डॉक्टर्स, डॉक्टर उस्मान हमदानी हैज़ joined us, और डॉक्टर उस्मान, just to give you a brief overview of what I have communicated to the participants up till now, उनको हमने जो गूगल फॉर्म जो हमने उनके साथ शेयर किया था उसके बारे में हमने उनको दोबारा वो लिंक उसका शेयर किया है, और वो जिन लोगों ने उसको नहीं फिल आउट किया और हमारे साथ अपनी लोकेशन शेयर नहीं की हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब उसको फिल कर दिया और हमारे साथ अपनी लोकेशन जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं सिटी वाइज जहाँ पर वो हैं वो लिख के हमें भेज रहे हैं। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हमें चैट में भी लिख के भेज रहे हैं। इसके अलावा जो है, जो हमने पिछले सेमिनार में चीज़ें पढ़ी थी वो उनको बता दी हैं अभी। और फीडबैक फॉर्म को रेगुलरली फिल आउट करके भेजें क्योंकि उसकी अटेंडेंस भी बड़ी कम हो रही थी। और जो है ग्रुप एलोकेशन पे बात की है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनके ग्रुप्स बने हुए होंगे तो जो हमने अपना रिसर्च प्रैक्टिकम का कंपोनेंट है, हमारे केस लॉ की डिस्कशन है, वो हम इजीली उनके साथ कर सकते हैं। सो वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस डॉक्टर उस्मान? थैंक यू डॉक्टर हुदा। नहीं, मेरा ख्याल आपने कवर कर लिया जो मैं कहना चाहता हूँ।
Basically, as you all know, not all of you have the access to the patients, and it would also be a good learning experience if you are all kind of put together in groups and then are able to work together. So it's important that uh, you all share the locations so that we are able to put you all in groups. And once you are allocated the groups, we will do the group supervision और collective learning experience होगा टीम का आपका. और इवन अगर कोई एक भी केस प्रेजेंट कर रहा होगा तो बाकी लोग उसकी प्रेजेंटेशन से उसकी डिस्कशन से बहुत कुछ सीख सकेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग जो है अपनी लोकेशंस को और उनको शेयर करें. और जैसे मैसेज में भी कहा था कि अगर आप में से किसी को भी क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक्सेस नहीं है या आप लोग अनक्लियर हैं अबाउट मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स की असेसमेंट मैनेजमेंट वगैरह के हवाले से, तो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, दैट वी विल टेक केयर ऑफ इंशाल्लाह. So I think the most important thing for you to do is to share your locations and your practice ताकि हम इसको मज़ीद आगे लेके चल सकें. Thank you, Dr. हुदा. जी थैंक यू डॉक्टर उस्मान। डॉक्टर फाइज़ा, आपने अपनी लोकेशन शेयर करनी है उस प्लेस की जहाँ पे आप काम करती हैं। आपने मुझे मैसेज में लिखा है कि यू आर वर्किंग एज अ एमओ इन कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर। तो उसकी लोकेशन जो है ना वो आपने गूगल मैप से कॉपी पेस्ट करके हमारे गूगल फॉर्म पे शेयर करनी है। तो आपकी वर्किंग प्लेस की लोकेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। आई होप दिस एड्रेस योर क्वेरी डॉक्टर फाइज़ा। जी थैंक यू। Dr. Huda, let's take a start. Dr. Ali is running late from a meeting, so we can take a start. जी डॉक्टर उस्मान। Um, go to the next slide. आप में से कभी पिछली स्लाइड पे आ जाए, सॉरी. आप में से किसी ने बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट कभी देखा है या एक्सपीरियंस किया है? अगर आपने देखा या एक्सपीरियंस किया हो तो आपको ये पता होगा कि मैं आपको एक सादा सी आम फहम मिसाल देता हूँ इसकी. जैसे आपके फ्रिज का या एसी का थर्मोस्टेट होता है जिसका आप एक टेम्परेचर सेट करते हैं.
और एक नॉर्मल हम ये कहते हैं कि 22, 23, 24 एक टेम्परेचर होता है। डॉक्टर सितारा कह रही हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो डॉक्टर सितारा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट लेके हमें बताएं जब मैं आपसे कहूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट मी नो एंड आई इनवाइट यू देन। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह एक थर्मोस्टेट होता है ना, आपके फ्रिज का, आपके एसी का, और आप उसको एक टेम्परेचर पे सेट करते हैं, और आप उसके ऊपर देखते हैं कि भाई ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है। और ठीक है, जब जैसे सर्दियाँ आती हैं तो आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर को ऊपर कर देते हैं। इसी तरह जब गर्मियाँ आती हैं तो आप टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं। तो दिस इज़ अ नॉर्मल रिएक्टिविटी पैटर्न टू द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस टेम्परेचर का। आप इसी तरह समझें कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक मूड का भी थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, जिसका ये काम है कि मूड को ना एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना। हर वक्त आप खुश भी नहीं होते और हर वक्त आप उदास भी नहीं होते। हद से ज़्यादा उदासी भी बीमारी है, हद से ज़्यादा खुशी भी बीमारी है। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, वो एग्जैक्टली आप ये समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर जो मूड का थर्मोस्टेट है ना, उसका मेल फंक्शन है। कि वो इंसान जो है ना, वो एक नॉर्मल मूड के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। जैसे हम उठते हैं नॉर्मली, कोई चीज़ अच्छी होती है, हमारा कुछ देर के लिए मूड अच्छा हो जाता है, कोई चीज़ थोड़ी ख़राब होती है तो थोड़ी देर के लिए मूड ख़राब हो जाता है भी, बट वी आर अराउंड द नॉर्मल बेस लाइन वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स। अच्छा, तो लेकिन जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि द पर्सन इज अनएबल टू मेंटेन दैट नॉर्मल वेरिएशन ऑफ मूड पैटर्न। बल्कि होगा ये कि वो शख्स या तो डिप्रेशन के फेज में चला जाएगा, और डिप्रेशन के फेज से निकलेगा तो वो आपका हाइपोमेनिया या मेनिया के फेज में चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट नॉर्मली हैपन्स। और ऑब्वियसली एज यू कैन इमेजिन कि ये उस शख्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी अगर वो शादीशुदा है तो फैमिली लाइफ को, अगर गैर शादीशुदा है तो उसके अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के लिए। क्योंकि एक शख्स उदास है, परेशान है, बिल्कुल डिप्रेशन के फेज़ में, और फिर जो मैनिक और हाइपोमैनिक होता है तो बिल्कुल दूसरे फेज़ में चला जाता है। डॉक्टर सितारा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने जो पेशेंट देखा, आपने उसमें क्या देखा? Sorry, this is Dr. Sarita. Sarita. I thought it is Sitara. Dr. Sarita, do you want to comment? Or anyone else? Maybe it would be useful to bring in some experiences that you people had, and I would like कि आप में से कोई अगर इसमें आना चाहे और comment करना चाहे, but obviously I don't want to. So डॉक्टर शाहिदा, डॉक्टर शानीला और डॉक्टर महविश, आप सारे, और so वो ये कह Dr. रही हैं। Sarita, you can also ask question. We unmute you if you want to share your experience. हाँ, अगर अनम्यूट करके आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और डॉक्टर शाहिदा हैज वॉलंटियर। डॉक्टर शाहिदा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? और डॉक्टर हुदा, आप अनम्यूट कर सकते हो उन्हें अगर वो बोलना चाहें तो। Dr. Shaida, you can speak now. Ji, Assalamu alaikum. I had seen a patient here. She was a young girl, about 20, 25 years old. यहाँ पर job पर आई थी. I'm based in Dubai basically. So वो यहाँ पर job पर आई थी, and all of a sudden she started hallucinating. उसको job पे जहाँ पे वो काम कर रही थी, she said कि हमको, मुझे कोई बोल रहा था कि तुम जाओ और अब्यूज करो अपना जो तुम्हारा सीनियर है उसको, और I'm above everyone. So she had all these delusions and all these things. When she was working there, she started abusing. बिल्कुल ठीक है। मैनिक फेज आया उसका. She went outside. यहाँ के जो पैलेस पे जाके उसने कहा कि my father is inside and I want to go inside. तो वहां से she police
took her to the mental health facility here, जहाँ पे उसकी treatment start हुई. She was diagnosed as having a bipolar disorder, and then when I visited her, because I was contacted by someone, उसकी family का, to go and see her. So when I went there, so she went in a depressive phase and she was crying all the time, and उसको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ है या क्या कर रही है. She acted as if she was in a phase where she was very helpless. So वो बिल्कुल ही depressive mode था जो मैंने देखा. After that, she was discharged from the hospital with the medication and everything. काम पर गई है, and then I met her again, and then again she was in a very hyper active mode. Everything is fine, I'm living the best life and everything. So दोनों जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ऊपर नीचे जो thermostat की example आपने दी, I saw that in her. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. डॉक्टर शाहिदा नाज, आप भी कुछ शेयर करना चाहती हैं, या डॉक्टर सरिता आप, या डॉक्टर शानीला, मतलब आप में से कोई और भी अगर कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज ओपन स्पीक अप. डॉक्टर राबिया, जी एनीवन डॉक्टर एल्स? सरिता, यू कैन स्पीक नाउ. और डॉक्टर शाहिदा नाज. जी डॉक्टर ताहिर, यू वांट टू? जी जी. मैंने भी एक फीमेल एक्सपीरियंस की थी डॉक्टर साहब की बाजवा के क्लिनिक में. 42-45 ईयर्स ओल्ड थी. उनका भी कुछ ऐसा ही मैनिक एपिसोड था, बाइपोलर डिसऑर्डर का ना. तो शी पुट अ लॉट ऑफ मेकअप एंड डू सो मच एक्साइटेड शी वाज. तो उनकी फैमिली डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि वो काफ़ी टॉकटिव थी और काफ़ी एनर्जेटिक थी कि वो कुछ भी करने को तैयार होती थी ना. तो उनकी फैमिली ये डिस्टर्ब थी कि हम लोग समझ नहीं पाते इनके फेस का. कभी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, अपने आप को बंद कर लेती है कमरे में, बात भी किसी से नहीं करती, हालाँकि पीछे कोई ऐसी बात भी नहीं होती. और कभी ये इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि इतना वेल ड्रेस्ड हो जाती हैं, शॉपिंग वगैरह करती हैं, फुल स्पेंड कर देती हैं मनी. तो हम इनको बिल्कुल एक मतवाज़न नहीं रख पाते ना किसी एक भी चीज़ पर. इनका मूड इतना एक्साइटेड है या डिप्रेस्ड है. तो वो कह रही थी खातून कि मुझे ऐसी कोई मसला नहीं है, मतलब वो डिनाई कर रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मेरा दिल कर रहा है तो मैंने खुश होना ही है ना, मेरी फैमिली को इतराज़ होना नहीं चाहिए. लेकिन वो अपनी ज़ाहिर है अपनी बीमारी को उससे एड्रेस नहीं कर पा रही थी. तो ऐसे काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मतलब वो देखने से ही आपको थोड़ा समझ आ जाता है कि पेशेंट को मसला है ना. उसका जो बिहेवियर है और उसकी जो लुक है और उसका जो अंदाज़ है, उसी से समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ मसला है, इनको किसी की ज़रूरत है, एक डॉक्टर को देखने की. तो ऐसे मैंने काफ़ी पेशेंट्स बाइपोलर डिसऑर्डर्स के वहाँ देखे थे. Thank you so much. And any last participant who would like to share the experience before I take it forward? ओके, मैंने ये इसलिए कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे केसेस डिस्क्राइब किए हैं, और ये आपके लिए अच्छा होगा इनको याद रखना भी इस लिहाज से. जैसे डॉक्टर साहिबा ने पहला केस बताया, डॉक्टर शाहिदा ने, आप उसमें पहली चीज़ हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि शी हैड रीलोकेटेड टू अ न्यू प्लेस, टू अ न्यू जॉब. तो देयर वाज अ साइको सोशल स्ट्रेसर. अब ये एक अहम काइंड ऑफ क्यू है कि उसने शख्स ने एक ट्रांजिशन आई लाइफ में, कोई साइको सोशल स्ट्रेसर था जिसने उनके जो नॉर्मल मूड की वेरिएशन है उसको डिसरप्ट कर दिया, और वो हाइपोमेनिक और मैनिक फेज के अंदर चले गए. सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग. और अभी तक जो दोनों केसेस डिस्क्राइब हुए, तो उसमें बहुत अच्छे जो है हाइपोमेनिया के और मेनिया के फीचर्स डिस्क्राइब हुए. हाइपोमेनिया और मेनिया दोनों डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिबान ने बड़ा अच्छा दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि एक फेज था जब वो हाइपोमेनिक थे, जब लोगों को एहसास हो रहा था कि इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज टॉकेटिवनेस, ग्रैंडियोज आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. दुबई के बादशाह के महल में जाके पहुंच गए, मतलब दैट्स, इसी तरह शॉपिंग, रेकलेस स्पेंडिंग, ये सारा का सारा कुछ, ये सारे फीचर्स हैं इन तमाम चीज़ों के. तो ये हाइपोमेनिया और और मेनिया में डिस्टिंक्शन यही होती है कि हाइपोमेनिया में ये सारी चीज़ें हमको नज़र तो आ रही होती हैं,
एट वर्क प्लेस, एट होम, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो डिसरप्शन कॉज करते हैं। और मैनिया तब आ जाता है जब वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे, और हम इसके ऊपर कुछ देर में बात करेंगे अभी आगे जाके। तो दूसरी चीज़ ये कि फिर वो डिप्रेसिव फेज़ में जाते हैं जब मैनिक फेज़ एंड होता है। और अब आप खुद ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में मसला ये हो कि उसका मूड एक नॉर्मल बेसलाइन के अराउंड चलता ही ना हो, या तो वो मैनिक और हाइपोमैनिक फेज में चला जाता हो, या वो डिप्रेस्ड फेज में चला जाता हो। सो यू कैन वेल इमेजिन कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल जो कि इस तरह के कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू वर्क विद देम, स्पेशली इन आर कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग्स, जहाँ पे लोगों को साइकाइट्रिस्ट तक जाने में बहुत देर लगती है स्टिग्मा की वजह से, बैरियर्स की वजह से। उसके बाद साइकाइट्रिस्ट के साथ कंप्लायंस करना बहुत मुश्किल होता है। और इस डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू इंश्योर कंप्लायंस विद मेडिकेशंस। अगर वो अपनी दवाइयाँ मिस करेंगे, ओवरडोज करेंगे, सही डोज नहीं ले रहे होंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जिस भी फेज़ में है वो दूसरा फेज़ उसका ट्रिगर हो जाएगा। सो इसमें प्राइमरी केयर फिजिशियंस का मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि दे आर द पीपल हु कैन एक्चुअली वर्क विद दीज फैमिलीज, और पीपल टू एक्चुअली हेल्प देम वर्क थ्रू दिस थिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं डॉक्टर हुदा। तो नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज मोर अबाउट स्टिग्मा और बाइपोलर डिसऑर्डर जिन लोगों का ये मसला रहता है। तो जाहिर है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ें डिसरप्ट हो जाती हैं, और किसी को नहीं समझ आती कि इसका करना क्या है फिर, क्योंकि जाहिर है वो कभी एक तरफ है और कभी दूसरी तरफ है। नेक्स्ट। अब आप ये समझ सकते हैं कि डिस्टर्ब मूड है, जहाँ पे बेसिकली मूड की एपिसोड्स होंगी जो मैनिक होंगी, और दूसरी तरफ होंगी जो डिप्रेस्ड होंगी। और बीच में कुछ पीरियड आता है जो बिल्कुल ठीक रिकवरी का पीरियड भी होता है, तो पर्सन डज रिटर्न टू नॉर्मल, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता। और जब मैनिक होता है ना, तो उसकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी लेवल्स होते हैं। लोग इस टाइम पे क्या करते हैं, शादियां कर लेते हैं। पता चलता है कि वो अंकल हैं, बूढ़े से हैं, सब कुछ है, लेकिन अचानक उनको ख्याल आया है कि मैं जवान हूँ और मैं कपड़े शपड़े पहनता हूँ, और वो जाते हैं और वो कोई पता चलता है घर में बहू हैं, बेटियां, सारा कुछ है, वो अपनी बेगम लेके आ जाते हैं। इसी तरह के लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। अगर कोई फ्रॉड बंदा जो है ना, वो इस तरह के किसी कंडीशन के अंकल को, किसी को पकड़ ले और उसे पता चल जाए कि यार ये तो बिल्कुल ना फ्रेंडली बहुत हुए हुए हैं, ओवर स्पेंडिंग के मूड में, उन्हें कहते हैं ले जी मैं आपको ना मलिक राज बना दूंगा, ये जो ज़मीन है ना मैं आपको ऐसे करा दूंगा, बस जी आप ये पैसे दें मुझे। वो उसी टाइम जो है ना विदाउट थिंकिंग ये सारा कुछ कर देते हैं। आई हैव सीन मैनी केसेस क्लिनिकली एक्चुअली, जहाँ ना फिर बच्चों को उनको लेके आना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, ये घर बेच रहे हैं, ये गाड़ी बेच रहे हैं, ये शादी करने की बात कर रहे हैं, ये रिश्ते के लिए आ गए थे, और हमारे लिए तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, इतनी सोशल शेम है कि इनके देखें बड़े क्या कर रहे हैं। इसी तरह अगर बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, मतलब इट बिकम्स अ मेस फॉर देम ऑल ऑफ अ सडन। और उनमें आप देखेंगे कि अब ये मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री टेकिंग और मेंटल स्टेट के फीचर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा, आप उनका मूड देखेंगे, कहेंगे जी बहुत खुश हूँ, ज़बरदस्त है, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सारे मेरे आगे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, जो चाहता हूँ वो करता हूँ, जो चाहता हूँ सोचता हूँ वो हो जाता है। उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, अपने आप को समझते हैं अच्छा। जो लोग कुछ होते हैं ना रूरल बैकग्राउंड से, जिनका रिलीजन की तरफ ज़्यादा होता है, नाउजुबिल्ला वो ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ना वही आ रही है, मैं पैगंबर हो गया हूँ, मैं वली अल्लाह हो गया हूँ। और उनके रिलीजियस थीम्स हो जाते हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, और फिर वो उसके लिहाज से उसके जो है ना आपको आइडियाज़ ऑफ ग्रैंडियोसिटी नज़र आएंगे। और इसी तरह उन्हें कहेंगे मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कह रही हैं कि तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है किसी बड़े मिशन के लिए। और आप इन सारी चीज़ों में एक जो कॉमन प्रेडिसर देखेंगे ना, वो ये होगा कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी उनके लिए। मुझे याद है मैंने इसी तरह का एक मरीज़ देखा था जो कि ये था, टेलर था, टेलर मास्टर। और ईद के अराउंड जब उस पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर बना, उसने बहुत सारे ऑर्डर ले लिए लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया, तो एकदम से वो इस फेज़ में चला गया और उसे परियां नज़र आना शुरू हो गई और उसको बाकी सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि फिर इसके साथ ये बाकी सारे बिहेवियर्स भी आते हैं। नेक्स्ट। तो अब आप ये देख सकते हैं कि किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरह इसमें भी उसका इम्पैक्ट ऑन सोशल सोसाइटी, ऑन सोसाइटी है, बिकॉज ये नॉर्मल प्रोडक्टिव लोग होते हैं, लेकिन इनकी मूड की वेरिएशन और डिस्टर्बेंस की वजह से दे कांट रियली वर्क, एंड ऑब्वियसली दे विल हैव टू बी रिस्ट्रेन्ड। और बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ
प्रॉब्लम्स के साथ कि जब अगर वो हाइपोमैनिक और मैनिक फेज में जाते हैं तो बाज़ का तो पैरानॉइड भी हो जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पुलिस वालों से लड़ पड़ते हैं। अब आप सोचें ना, कोई शख्स अपने आप को वजीर आजम समझ रहा है और वो पुलिस वाला उसे सलूट नहीं कर रहा, तो वो तो पुलिस वाले से लड़ पड़ेगा। अब पुलिस वाले को तो नहीं समझ आनी कि ये मैनिक है या हाइपोमैनिक है, उसने तो पकड़ के उसे पर्चा करना, उसे बंद कर देना। एंड आई हैव आल्सो सीन केसेस लाइक दैट एज वेल। तो ये एक पोटेंशियली इनकी ना लॉ के साथ भी बड़े मसले बन जाते हैं फिर इसी वजह से, क्योंकि वो ग्रैंडियोस थीम्स में होते हैं और वो फिर सब कुछ कर जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो तो बहुत प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और कानून उन पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा बाइपोलर का जो मैनिक फेज है उसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं। तो जिसमें क्या होगा कि एक डिस्टिंक्ट पीरियड होगा एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, और 3 या मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो मेनिया हैं वो होंगे, जिसमें क्या है, एलिवेशन ऑफ मूड, इंक्रीज्ड एक्टिविटी। लोग सोते नहीं है, वो कहते हैं जी मुझे तो ताकत आ गई इतनी कि मैं जागा रह सकता हूँ, और काम करते जाएंगे जो भी कर रहे हैं। आप सुन देखेंगे वो कहेंगे जी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, ओ जी ये यहाँ से निकला तो पता चला कराची पहुंच गया, वहां से पता चला तो वहां पहुंच गया। मतलब जिसका भी जो एक अपना सोशल सर्कल है और उसकी जो अपने लाइफ के पैटर्न्स हैं, वैल्यूज हैं, उसके लिहाज से ना आप उसमें बहुत एडवांसमेंट देखेंगे, और उनमें आपको सेल्फ इम्पोर्टेंस के आइडियाज। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि ये जो है ना एटलीस्ट 1 वीक तक होनी चाहिए एपिसोड उसकी, या अगर उसके फीचर्स ऑफ सिम्टम्स इनके इतने ज़्यादा हैं कि आपको उसे अस्पताल दाखिल कराना पड़ा है, तो फिर 1 हफ्ते से कम पे भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जिनका मूड वैसे थोड़ा सा ऊपर और नीचे होता रहता है, वो आप पर्सनैलिटी के लिहाज से लोगों को देख सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट मैनिक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब वो एकदम से आप, एक उर्दू में मुहावरा होता है, पल में तोला पल में माशा, तो वो वाली कंडीशन नहीं है ये पल में नहीं होंगे, इन्हें हफ्ता एक एक परसिस्टेंट पैटर्न, और बीच में नॉर्मल पैटर्न, और फिर दोबारा दूसरा डिप्रेशन का फेज आना, ये बिल्कुल इस तरह से होगा। और मैनिया आप तब डायग्नोज करते हैं जब डिस्टरबेंस इतनी ज़्यादा सीवियर हो कि उसकी ऑक्यूपेशन या उसका काम और जो उसकी सोशल फंक्शनिंग है, जो उसका अपना सोशल रोल है, वो मुतासर हो जाए। और इसमें जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि लोगों को आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, मतलब साइकोसिस के फीचर्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि व्हाट डू वी से व्हेन वी टॉक अबाउट मैनिया। नेक्स्ट। डॉक्टर मैविश ने किसी के बारे में कमेंट किया है, लेकिन वो एक नहीं, मतलब यहाँ तो काफ़ी सारी आवाम इसी तरह की नज़र आती है मुझे। मैनिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? एलिवेटेड मूड, usually not in keeping with the circumstances, increased energy, विच में मैनिफेस्ट एज ओवर एक्टिविटी, बगैर सोए ड्राइव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रेशर्ड स्पीच, बहुत तेज बोलेंगे, मुसलसल बोलते जाएंगे, रेसिंग थॉट्स, एक के बाद दूसरा ख्याल आ रहा होगा, उन्हें सोने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें खाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें पीने की जरूरत नहीं होगी, नॉर्मल जो ह्यूमनली फंक्शंस है ना वो एक तरह से सस्पेंडेड हो जाते हैं फॉर देम, और वो अपने आप को कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना शुरू हो जाते हैं बेस्ड ऑन, ये डिपेंड करेगा कि उनका अपना बैकग्राउंड क्या है। रिलीजियस हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, फौजी बन सकते हैं, मतलब कुछ भी उनके जहन में जो भी उनके लिए बहुत अहम सेल्फ एस्टीम के लिहाज से बड़ा आइडिया है। तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होंगे, ग्रैंडियोस थीम्स होंगे, सोशल इनिबिशंस ख़त्म हो जाएंगी, मतलब जो एक नॉर्मल झिझक होती है, एक नॉर्मल हमारी सोशल बाउंड्रीज होती है ना, ख़वातीन से कैसे बात करनी है, बड़ों से, छोटों से, ओवर फेमिलियरिटी, बिल्कुल ऐसे गपशप लगाना शुरू कर देंगे खड़े होके जैसे आपकी उनकी बहुत जान पहचान है, हालांकि कुछ होगा ही नहीं इस तरह से। मतलब ये बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं जो कि आपको उनमें नजर आएंगे। नेक्स्ट। अटेंशन उनकी बहुत कम होती है, इवन आप इस तरह के पेशेंट का मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन और हिस्ट्री भी नहीं ले सकते, वो ऐसे बैठे होंगे और वो फौरन इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इस बात को पकड़ लेंगे, उस बात को पकड़ लेंगे, नई गप लगाना शुरू कर देंगे, टॉपिक चेंज हो जाएगा, कुछ भी करते जाएंगे। और मैंने जैसे कि कहा कि उनके अंदर जो है बिहेवियर रिस्क टेकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, हो सकता है गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना शुरू कर दें, हो सकता है इम्प्रैक्टिकल स्कीम्स का हिस्सा बन जाएं, सेक्सुअल एनकाउंटर्स इनअप्रोप्रिएट कर सकते हैं वो इस दौरान में, और इसी तरह उनमें एक्साइटमेंट, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, सस्पिशियसनेस, डिसरप्शन ऑफ वर्क, यूजुअल सोशल एक्टिविटीज़ और फैमिली एक्टिविटीज़, और फैमिली के सारे डिस्टर्ब होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें नज़र आ सकती हैं। नेक्स्ट।
इसमें ग्रैंडियोस आइडियाज होंगे, डिल्यूजन्स भी आ सकते हैं रिलेटेड टू आइडेंटिटी और रोल। जैसे मैंने कहा कि वो कहेगा मैं मुझे जो है ना कोई रिलीजन के लिहाज से बड़े रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, मुझे वही आ गई है, मुझे अल्लाह ताला से बातचीत हो रही है, मैं पैगंबर बन गया हूँ नाउजुबिल्ला, कोई भी इस तरह की बातचीत। उनमें सस्पिशियसनेस आपको नजर आएगी, लोग मुझे मारना चाहते हैं, जेलस हो गए हैं, हसद कर रहे हैं मेरे से बहुत मेरी ताकतों से परेशान हो गए हैं। उनकी स्पीच में आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि उनकी एसोसिएशंस नहीं है, रब्त नहीं है बात में, एक से दूसरी बात पे चले जाते हैं, एक बड़ी गप मार रहे होंगे फिर दूसरी बड़ी गप पे आ जाएंगे, फिर तीसरी बात पे चले जाएंगे। उनमें इरिटेबिलिटी होगी, एकदम से ना थोड़े से वो अपसेट होना शुरू हो जाएंगे, गुस्से होना शुरू हो जाएंगे, एग्रेशन भी कर सकते हैं अगर आप उनके आइडियाज़ को, अगर आप कहना वो तुम किधर से पैगंबर हो गए या क्या हो गए, बिकॉज दे बिलीव इन दैट आइडिया। ये उनकी मेंटल इलनेस का पार्ट है। सो जो है आप उसमें नज़र आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ क्या होगा कि उनमें सेल्फ नेग्लेक्ट आपको नज़र आ रही होगी, और जैसे मैंने कहा कि वो खा नहीं रहे होंगे, पी नहीं रहे होंगे, उनकी लिविंग कंडीशंस पुअर होंगी। कैटाटोनिक बिहेवियर भी नज़र आ सकता है उनमें, कि वो एक पोज में फिक्स हो गए हों, जिसे हम मैनिक स्टूपर कहते हैं, और उन्हें कोई इंसाइट नहीं होती मैनिया के फेज के अंदर। सो सो दीज आर द की फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स। नेक्स्ट, अब डिफरेंशियल्स, जैसा कि आपने सुना था, हमने पहले बात की थी कि स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस के दूसरे डिसऑर्डर्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उनमें ना ये ग्रैंडियोस थीम्स इस तरह से नज़र नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह आपने देखा होगा, याद होगा आपको, कि हमने पीटीएसडी में बात किया था कि उनको फ्लैशबैक्स होते हैं, और उनको ना दोबारा वो तमाम चीज़ें याद आती हैं, या वो हालात और वाक़यात उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, विच मे बी कन्फ्यूज्ड विद सिमिलर थिंग्स। अच्छा, अल्कोहल और ड्रग मिसयूज़, मैंने वैसे आप लोगों से वैसे भी ये बात करनी थी। आपने देखा होगा कि हमारे दीन ने हमें मना किया है अल्कोहल से और ड्रग्स से, और आपने देखा होगा कि साइकाइट्री में, वैसे तो मेडिकल में आपने डेविडसन जब पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि हर चीज़ के रिस्क फैक्टर्स में अल्कोहल आ रहा होता है, लेकिन आपने साइकाइट्री में ये देखा है कि हाउ इट मेसेज अप विद योर ब्रेन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड एवरीथिंग, एंड सिमिलरली फॉर द ड्रग्स। और आप ये देखते हैं कि हमारे दीन में एक ये खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से ना उस तमाम पहली स्टेज से ही मना कर दिया हुआ है कि बंदा सोचे भी ना इन चीज़ों का। एंड यू कैन सी कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स हाउ टेरिबली दे मेस अप विद योर ब्रेन एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, और तमाम कंडीशन में आप देखते हैं कि अल्कोहल या ड्रग मिसयूज जो है ना इज़ अ ट्रिगर पॉइंट फॉर दीज थिंग्स। नॉर्मली एडोलेसेंट्स में ये होता है कि जब वो चर्च वगैरह शुरू करते हैं तो दैट लीड्स टू दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, जिसमें साइकोटिक फीचर्स, मैनिक फीचर्स और ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एंड नाउ एट दैट पॉइंट फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे आपको ये भी याद होगा कि अगर हमें कोई क्लियर वजह की किसी वजह से नज़र आए तो हम उसे साइकोसिस कहते हैं, सिम्टम्स, लेकिन अगर ना हो तो फिर वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ बात चली जाती है। तो बहुत सारे यंग एडोलेसेंट्स में आपको इन तमाम चीज़ों से भी ये चीज़ें नज़र आती हैं, और मैनिया और हाइपोमेनिया भी किक इन हो सकता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि हमें फाइनल प्रॉफ में या प्रॉफ में तमाम को स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं अपने आप को जगाए रखने के लिए, पढ़ने के लिए, एंड अगेन बिकॉज इट messes अप विद योर न्यूरोट्रांसमीटर, सो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसी तरह आपको पता है हाइपर थायराइडिज्म में हाइपर एक्टिविटी होती है और ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। एक और जो मेडिकल कंडीशन में आपको चाहूँगा, कीप इट इन योर माइंड, जब हम किसी पेशेंट को स्टीरॉइड्स देते हैं ना, तो एक चीज़ स्टीरॉइड इंड्यूस्ड मैनिया भी होती है और साइकोसिस भी। तो कीप एन आई ऑन द पेशेंट्स कि जिनको आप एकदम से हाई डोज स्टीरॉइड दें किसी भी कंडीशन के लिए, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर मैनिया और साइकोटिक फीचर्स, स्पेशली जहाँ हम ओल्ड एज में लोगों को एस्थमा के लिए और इस तरह की कंडीशंस के लिए स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दैट कैन देन प्रेजेंट विद सच सिम्टम्स, एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग एज वेल, स्पेशली जहाँ प्राइमरी केयर में जो लोग होते हैं वो इस तरह के स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड देन दैट ट्रिगर्स दिस मैनिक और हाइपोमैनिक फीचर्स इन अ पर्सन, और इवन साइकोटिक फीचर्स। अच्छा, एक और जो अहम चीज़ है ना वो क्या होती है कि अगर एक आपके पास यंग पेशेंट आया है और पहली दफ़ा उसको डिप्रेसिव फीचर्स हैं, और आपने ना उसको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब कर दी। नाउ व्हेन अ पर्सन विद डिप्रेशन प्रेजेंट्स टू यू, यू कैन नॉट एक्चुअली टेल वेदर दिस इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ कंडीशन जो कि प्राइमरीली मेजर डिप्रेसिव इलनेस है, या ये बाइपोलर डिसऑर्डर का डिप्रेशन है। अब ये नुकता बहुत अहम है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि जब आपके पास पहली दफ़ा एक पेशेंट आए, यंग पेशेंट विद डिप्रेसिव इलनेस, और इवन फॉर दैट मैटर थोड़ा सा एजेड भी हो सकता है, जिसमें लेट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है मैनिया की और बाइपोलर की, तो आप जब उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं
तो आपको अब ये नहीं पता कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का डिप्रेशन है या ये यूनिपोलर डिसऑर्डर में मेजर डिप्रेसिव इलनेस है, और आप उसको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसकी जो एंटी डिप्रेसेंट है ना वो उसके मैनिक फीचर्स को ट्रिगर कर देती है। सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और इसीलिए फिर हमेशा हम ये कहते हैं कि स्टार्ट लो गो स्लो, ताकि आप उसके फीचर्स को ऑब्जर्व कर सकें। दूसरी अहम चीज इसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री लेने की जरूरत है। अगर आपको उसकी हिस्ट्री में ऐसे पैटर्न्स नजर आए कि भाई ये डिप्रेस्ड फेज में था और फिर उसके बाद वो कुछ इसका फेज आता है जब ये बहुत नॉर्मल भी होता है और बहुत हाइपर एक्टिविटी में भी चला जाता है, तो देन यू नो कि दिस इज अ डिप्रेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, and then you need to be extra careful in prescribing antidepressant, because you will prescribe antidepressant, this patient will shoot from depression to hypomania and mania। तो ये बड़ा अहम बात है। अच्छा, तीसरी चीज अगेन मैं समझता हूँ बड़ी अहम है, हमारे दीन में ना अल्लाह ताला ने अगेन हमारे लिए कितना अहम ये करार दिया है कि हम रात को आराम के लिए और दिन को काम के लिए यूज करें, और सर्केडियन रिदम की इंपॉर्टेंस को कितना ज्यादा ओवर एम्फेसाइज किया गया है। स्लीप की डिसरप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फॉर मेनी ऑफ दीज कंडीशंस अगेन, बी इट डिप्रेशन और बी इट बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर में मैनिया और हाइपोमेनिया के साथ स्लीप का बहुत अहम ताल्लुक है। इन मैनी ऑफ द केसेस जब ये मैनिक और हाइपोमेनिक चीजें ट्रिगर होती है ना, तो वो आपके स्लीप डिसरप्शन से होती है। सो दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत अहम है। यू मस्ट रिमेंबर देम फॉर योर पेशेंट्स, और जब भी आप उनको देखें, अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू पुट दैट इन द चैट। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ड्रग रिलेटेड मेनिया इज डिस्क्राइब्ड विद मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स, लेस विद एसएसआरआईज। साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस दूसरी भी इस तरह की चीजें कर सकती हैं, और स्टीरॉइड्स भी कर सकते हैं। तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड व्हेन यू प्रिस्क्राइब स्टीरॉइड्स, व्हेन यू प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट्स एंड अदर psychotropic medications, and then you see a patient with mania, so you will be able to then link कि ये एंटी डिप्रेसेंट रिलेटेड हो सकता है। इसी तरह जब आपके पास कोई पेशेंट मैनिक हाइपोमैनिक फीचर्स के साथ आए, प्लीज टेक अ गुड ड्रग हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड कि इसने कोई स्टिमुलेंट्स तो नहीं लिए, कोई सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं था, कोई अल्कोहल इंटेक तो नहीं था, कोई स्टीरॉइड तो नहीं लिया, कोई दूसरी एसएसआरआईज तो नहीं लिए। नेक्स्ट। मैनेजमेंट सबसे अहम क्या है कि आप जो मैंने भी आपको बात बताई कि दूसरी कॉजेज को एक्सक्लूड करें, बिकॉज पहले आप उनको एक्सक्लूड करेंगे तो फिर आप ये डायग्नोसिस बना सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है। अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। अब अगर कोई शख्स किसी नए मुल्क में आया है, किसी नए कॉन्टेक्स्ट में आया है, और उसे किसी ने कोई सब्सटेंस अब्यूज या कोई अल्कोहल या कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है जिसने ट्रिगर किए हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो हेयर। फिर इसी तरह जो साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं वो ज़रूर होते हैं, ये साइको सोशल स्ट्रेसर से ट्रिगर होती है चीज़। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर देम ताकि फ्यूचर में आप उसकी उस चीज़ को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट। अब हाइपोमेनिया क्या होगा? वही तमाम सिम्टम्स, ग्रैंडियोज आइडियाज, सेल्फ इंपॉर्टेंस के आइडियाज, इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज एक्टिविटी और वो सारा कुछ, लेकिन और एटलीस्ट 4 दिन तक हो, और किसी उसके नॉर्मल मूड से। हम सारों का एक नॉर्मल मूड होता है ना, लोगों को पता होता है कि हम नॉर्मली किस तरह के हैं। कुछ लोग वैसे ही बहुत अच्छे मिजाज होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, तो वो मैनिक हाइपोमैनिक नहीं होते, वो अच्छे खुश मिजाज लोग होते हैं। कुछ लोग वैसे ही सड़े हुए मिजाज के होते हैं, बिल्कुल ही खड़ूस किस्म के होते हैं, तो वो डिप्रेस नहीं होते, वो उनका मिजाज होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो वी नीड टू डिफरेंशिएट कि उस शख्स का वो नॉर्मल क्या है। और इसीलिए ना फिर आप जब उनसे पूछते हैं ना हिस्ट्री टेकिंग में, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है और एडोलेसेंस होता है और प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे इसलिए पूछना ज़रूरी होती है ताकि आप उस शख्स का नॉर्मल पर्सन देख सकें कि अदरवाइज ये शख्स कैसा था। अच्छा, अब उसमें ये सारे फीचर्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो उसकी सोशल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग से इंटरफेयर नहीं कर रहे, या उसमें कोई साइकोटिक फीचर्स नहीं है, या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हाइपोमेनिया या हाइपोमेनिक एपिसोड कहेंगे। नेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा कि वो तमाम फीचर्स मेनिया के, लेकिन लेसर डिग्री के, और उसकी डिसरप्ट नहीं करेंगे काम को, या उसको सोशल रिजेक्शन की तरफ नहीं ले जाएंगे। यानी अब वो शख्स टॉकेटिव है, ओवर फ्रेंडली है, लेकिन इतना नहीं है कि लोग उससे तंग पड़ जाएं और उसे कहें कि यार ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है। अच्छा, माइल्डली एलिवेटेड मूड होगा, एक्सपेंसिव होगा, या इरिटेबल मूड हो सकता है, उसकी एनर्जी एक्टिविटी बढ़ी हुई होगी, उसकी फीचर्स वेलबींग के, फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी के बहुत बढ़े हुए होंगे, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत बढ़ी हुई होगी, बहुत सोशलेबल होगा, बहुत टॉकेटिव होगा, नए लोगों के साथ भी ओवर फेमिलियर होगा, इंक्रीज सेक्स ड्राइव होगी, रिड्यूस नीड फॉर स्लीप होगी, और लेकिन वो किसी एक काम पे अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम फीचर्स हैं हाइपोमेनिया के।
लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं होंगे कि सोशल रिजेक्शन करें, उसके काम को डिसरप्ट करें या उसकी बाकी चीजों को, बट यू कैन सी कि ये अपने नॉर्मल से बढ़ी हुई हैं चीजें। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव मूड का मतलब यही होता है कि बहुत आप एलेटेड एलिवेटेड, मतलब उसके नॉर्मल से ज्यादा ऊपर की तरफ, खुशी की तरफ आप कह सकते हैं। अच्छा, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? एजिटेटेड डिप्रेशन। अब कुछ लोगों में डिप्रेशन होता है, उसके साथ इरिटेबिलिटी के मार्क्ड फीचर्स होते हैं, सो दैट कैन आल्सो बी समथिंग दैट कैन मिक्स अप विद हाइपोमेनिया। अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें एंजाइटी में भी होती हैं। सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर एक पूरी नई कैटेगरी है, वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट देम, बट यू शुड नो कि इन तमाम चीज़ों का इंटरफेरेंस एक बंदे के नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल से भी रिलेटेड है। और जब आप इस तरह के किसी पेशेंट को देखें तो सब्सटेंस मिसयूज को, फिजिकल इलनेस को, मेडिकेशंस को ज़रूर प्रोब करें एकदम से। जो है वो डू नॉट जंप ऑन द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, यू नीड टू एक्सक्लूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डॉक्टर फायजा ये पूछ रही हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन कॉज बाइपोलर डिसऑर्डर, एनी साइकोसोशल काइंड ऑफ एडवर्स इवेंट्स, जिन्हें हम ना साइकाइट्री की ज़बान में कहते हैं या मेंटल हेल्थ में अर्ली चाइल्डहुड एडवर्सिटीज या इस एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स। तमाम एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स जो होते हैं ना, वो लेटर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं। तो बी इट बाइपोलर, बी इट डिप्रेशन, और अब तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने ना एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, सेल्फ हार्म, 5 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आपने देखा होगा कि कितने इनमें ओवरलैपिंग फीचर्स होते हैं। यानी अगर आपके पास पहला पेशेंट पहली एपिसोड पे डिप्रेसिव फीचर के साथ आ रहा है ना, तो वो यूनिपोलर डिप्रेशन भी हो सकता है, वो बाइपोलर का डिप्रेशन भी हो सकता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया की भी लिंक में आ सकता है और उसका प्रोड्रोम भी हो सकता है, और एंजाइटी के अंदर भी डिप्रेसिव फीचर साथ साथ आ रहे होते हैं। सो इसलिए बड़ा अहम होता है कि आप इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी हिस्ट्री के साथ, अच्छे मेंटल स्टेट के साथ कॉन्टीन्यूस फॉलोअप में लेके चले। और इसीलिए शायद आपने ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी साइकाइट्री का सुना होगा कि भाई मैं पहले डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा ये डायग्नोसिस है, फिर मैं दूसरे स्पेशलिस्ट के पास गया तो उन्होंने कहा ये, फिर मैंने जनरल साहब को दिखाया उन्होंने कहा ये, फिर मैंने प्रोफेसर साहब को दिखाया उन्होंने कहा ये। और वो पेशेंट ये समझता है कि ये ना या तो डॉक्टर की अपनी दुकानदारी है या डॉक्टरों को समझ नहीं है। लेकिन बाय दिस टाइम आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि these conditions evolve over time, and at any one point in time you can't actually be very definitively sure of it, and that is why I emphasize it is important for the primary care physicians to be able to understand and keep a very clear record of all the things, so that in a retrospect when you look at the condition you can actually then see what was wrong with the patient and what is the most probable diagnosis and what is the most appropriate line of treatment. Next. मैनेजमेंट जैसे कि पहले बताया, एक्सक्लूड करें अदर कॉजेज को। उसने कोई सब्सटेंस यूज तो नहीं किया, उसने अल्कोहल तो नहीं किया, कोई स्टीरॉइड तो नहीं लगा, कोई दूसरी साइकोएक्टिव सब्सटेंस तो नहीं लिया, कोई स्टिमुलेंट तो नहीं लिया, स्ट्रेसर तो नहीं है कहीं पे, स्लीप डिस्टरबेंस तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें देख के और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये हाइपोमेनिया है या मेनिया है। नेक्स्ट। और अगर कोई स्लीप डिस्टरबेंस की ऐसे चीज़ें हाइपोमेनिक हो रही हैं तो आप उसको बेंजोडाइजेपिन दे के उसकी स्लीप को ठीक करें तो वो वापस नॉर्मल रिवर्ट कर लेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर अली हाशमी ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है, ऐसा ही है? जी सर, डॉक्टर अली जॉइंड अस। सर, वेलकम। हाँ, डॉक्टर अली ने ज्वाइन कर लिया या? सर आई थिंक कोई इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हुआ है तो वो ओके डिस्कनेक्ट। जी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स ना, अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स पिक्चर हो सकती है। अब आप जहन में क्या चीज़ रखें कि बाइपोलर में दो फीचर्स हैं, दो एंड है स्पेक्ट्रम के, एक डिप्रेशन है और एक आपका मेनिया है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है कि मेनिया से पहले हाइपोमेनिया हो सकता है या मिक्स्ड पिक्चर भी हो सकती है। तो अब आपके पास क्या हो सकता है कि जब आप बाइपोलर डिसऑर्डर को क्लासीफाई करें किसी पेशेंट में, तो आप ऐसे बताते हैं कि माय वर्किंग डायग्नोसिस इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड मेनिया, करंट एपिसोड हाइपोमेनिया, करंट एपिसोड मेनिया विद साइकोटिक फीचर्स, हाइपोमेनिया विदाउट या विद साइकोटिक फीचर्स, करंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, करंट एपिसोड माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन,
or current episode severe depression with psychotic symptoms, without psychotic symptoms, या bipolar affective disorder currently in remission. So this is a good way in terms of the snapshot कि जब आप मरीज को देख रहे हैं bipolar spectrum disorder की bipolar spectrum disorders में, तो वो उसको क्या सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं. हो सकता है आप जब उस बाइपोलर वाले पेशेंट को देख रहे हो तो आपको हाइपोमैनिक फेज में मिले, वो आपको मैनिक फेज में मिले, वो आपको मैनिक विद साइकोटिक फीचर्स के साथ मिले, वो मैनिक विदाउट साइकोटिक फीचर्स के साथ मिले, वो रिमिशन में मिले, वो माइल्ड डिप्रेशन में मिले, वो मॉडरेट डिप्रेशन में मिले, वो सीवियर डिप्रेशन में मिले, वो सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स में मिले, वो डिप्रेस्ड उसमें मिले. सो दिस कैन बी अ होल. सो इसे ना हम बाइपोलर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं. जिस तरह की स्पेक्ट्रम होती है ना, कौसे कजा रेनबो, जिसमें तमाम शेड्स होते हैं, तो बाइपोलर को भी ना आपको मूड की दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान तमाम चीजों को रखना पड़ता है. And I will again emphasize, your history taking will help you with this. Your history taking will help you with this. So it's important you take a very good history, you do a very good mental state examination, you have a very good account of what other treatments the patient is taking, what is the layer life, what was the childhood, what was the adolescence, what was the pre-morbid personality, how long the patient has been unwell, what is this episode, has there been an episode जहाँ पे वो बहुत इलेटेड मूड के साथ था या डिप्रेस्ड मूड के साथ था, उसका फिर क्या किया था, अभी क्या दवाइयाँ ले रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस बाइपोलर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को देखने में. नेक्स्ट स्लाइड. डॉक्टर अली, आर यू हियर? Dr. Usman, he joined us, but there is some audio problem ओके, at his नो end. वरीज, नो वरीज, नो वरीज. अच्छा, अब ये बड़ी अहम चीज़ है, ये भी अपने जहन में रखें, जो आपको हेल्प करेगी टू मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि जो इसकी एज ऑफ ऑनसेट है ना, ये 15 से 50 साल के दरमियान कभी भी आ सकता है. जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों में वो अंकल की स्टेज पे रिटायरमेंट की लाइफ के अंदर पता चलता है कि ओवर स्पेंडिंग शुरू हो गई है, नई शादी का शौक आ गया है, घर बेच दिया है, गाड़ी बेच दी है, नई नई दोस्तियां, बाहर से अननोन बंदों को ले आए हैं, आए जी आए, सारे लोग आ जाए मेरे घर आए खाना खाएं. घर वाले परेशान है कि इनको क्या हो गया है. तो पीक जो है, इसकी पहली पीक आपको 15 से 19 ईयर्स के दरमियान मिलती है और दूसरी 20 से 24, और जो आपको मीन एज मिलती है वो 21 ईयर्स है इसकी, जहाँ पे आपको ये नज़र आता है. और पहली एपिसोड और जो पहली ट्रीटमेंट है, वो आपको पता है मेंटल हेल्थ में ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ सीकिंग ट्रीटमेंट. तो और ये जब इतना एक इसकी वेरिएशन आती है ना, कि डिप्रेशन और फिर मेनिया, हाइपोमेनिया और फिर ये सारा, तो नॉर्मली इट्स डॉक्यूमेंटेड कि 5 to 10 ईयर्स इंटरवल होता है बिटवीन द एज ऑफ ऑनसेट एंड द फर्स्ट ट्रीटमेंट. अगेन आई वुड एम्फसाइज कि आप लोग जो कि कम्युनिटी में हैं, प्राइमरी केयर में हैं, यू आर द पीपल हु कैन चेंज दिस सिनेरियो. जब आपके पास पेशेंट आए, आप उसको डॉक्यूमेंट करें, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लें, कंसल्ट करें और फिर इसको लेके चलें. अच्छा, फिर कोर्स जब आपने देखा ना कि बाइपोलर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो एक्सट्रीमली वेरिएबल हो सकता है. फर्स्ट एपिसोड इसकी हाइपोमेनिक हो सकती है, मैनिक हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है या डिप्रेसिव हो सकती है. एंड दैट इज़ वाई अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कॉन्टिन्यूस लॉन्गिट्यूडनल फॉलोअप में रखें, आप उसकी अच्छी हिस्ट्री टेकिंग लें और उसका अच्छा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करें. और जो अनट्रीटेड पेशेंट्स होते हैं उनको 10 दफ़ा ऊपर और नीचे हो सकता है इस तरह के एपिसोड्स आए. और ड्यूरेशन और टाइम जो है ना, जो स्टेबिलिटी का टाइम है, यानी जो एक हाई आएगा फिर लो आएगा और उसके दरम्यान में एक नॉर्मल पीरियड आएगा, ये पहले वेरिएबल होता है, लेकिन चौथी पांचवी एपिसोड के बाद ये स्टेबल होना शुरू हो जाता है. और पैटर्न ऑफ मूड स्विंग्स कैन वेरी बिटवीन पीपल. Some will have a couple of bipolar episodes in their lifetime and stay stable for the rest of their lives. Other will have many episodes. Some will only experience manic episodes. Some will experience more depressed episodes than manic episodes. So keep it in mind, we call it bipolar spectrum disorder, and you will have to work with the patient and the family over a long course of time. Next. अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी शख्स का मूड स्टेबल ना हो, तो हाउ डिफिकल्ट द लाइफ कुड बी फॉर द पर्सन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, फॉर द फैमिली. और अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में और सर्कमस्टांस में वो एक फीमेल है, तो आप सोचेंगे उनके लिए कितनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं. मेल के लिए भी होता है, लेकिन फीमेल तो क्योंकि स्टिग्मा, फ़ौरन दूसरी शादी, तलाक दो, फारिग करो, घर में कोई देखने वाला नहीं होगा, भाई उसे अबंडन कर देंगे, पेरेंट्स कब तक रख सकेंगे, अगर वो खुद है फिर उसकी अब्यूज़, मतलब बाकी सारी चीज़ें, तो it becomes really really complicated. High morbidity or mortality है in terms of lost work, lost productivity, effects on marriage, family,
अटेम्प्टेड सुसाइड ना 20 से 25% है और कंप्लीटेड सुसाइड 10% है। होगा क्या कि जाहिर है जब वो पेशेंट को इंसाइट आती है ना वापस, और उसको अंदाजा होता है कि उसने कितने सोशली एम्बेरसिंग काम कर लिए इस दौरान में, या अल्लाह ना करे उसका लॉ एंड ऑर्डर के साथ मसला बन गया है, तो जाहिर है किसी भी एक नॉर्मल शख्स के लिए जो वैसे एक अच्छा प्रोडक्टिव इंसान हो, कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, और फिर कोई इस तरह का उसको इवेंट फेस करना पड़े और फिर उसके साथ ये हो जाए, तो इट रियली बिकम्स अ वेरी बिग बर्डन फॉर देम। तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और फिर अब आप देख सकते हैं कि कोमॉर्बिडिटी ड्रग्स के साथ, अल्कोहल के साथ और एंजाइटी के साथ, अगेन आई वुड अगेन एम्फसाइज, जब भी आप साइकाइट्री की हिस्ट्री लें इन तमाम चीज़ों को ज़रूर पूछें। कोमॉर्बिड मेंटल हेल्थ कंडीशन, अगर आपको एंजाइटी मिल रही है तो डिप्रेशन भी होगा, बहुत चांस है कि होगा। अगर डिप्रेशन को देख रहे हैं तो एंजाइटी भी होगा। साइकोसिस को देखना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट, असेसमेंट। डॉक्टर अली ने ज्वाइन किया, लेट्स सी कि अगर सर इधर से टेकअप कर लें। सर, आर यू विद अस? नहीं, मुझे लगता है कि ही है सम इंटरनेट प्रॉब्लम, तो डोंट वरी, नो वरीज, आई कैन कंटिन्यू। असेसमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट। तो कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ साइकोसिस कैसे होगी कि मार्क्ड बिहेवियरल चेंजेस, neglecting usual responsibilities of work, social, domestic, or social, agitated, aggressive, decreased or increased activity, false beliefs होंगे, hearing voices होगी, lacking of realization that one is having a mental health problem। अब अगर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं तो आप डिलीरियम को भी देख सकते हैं, कोई सेरेब्रल इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ जैसा कि हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये नहीं है, तो फिर अब आप नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाएं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप फिर देखते हैं कि इसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, जैसे कि डिप्रेशन, डिमेंशिया, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं है, या किसी विड्रॉल की स्टेज में तो नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा ये कोई मैनिक एपिसोड तो नहीं हो रहा। अब आप उसको मैनिक मेनिया के स्पेसिफिक फीचर्स से पूछते हैं कि इसका मूड एलिवेटेड है या इरिटेबल है, वो सो नहीं रहा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, नॉर्मल सोशल इनहिबिशंस जैसा कि जैसा कि सेक्सुअल इनडिस्क्रिशन है, पल्सिव या रेकलेस बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा गाड़ी तेज़ चला रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहा है विदाउट थिंकिंग, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं कर पा रहा, और अपने आप को कोई बहुत ही बड़ी चीज़ समझ रहा है। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, तो फिर अब आप सोचते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनिक एपिसोड है। नेक्स्ट। अब बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन आपको बेसलाइन और वो सारी करनी होंगी, साथ ही साथ आप फुल ब्लड काउंट करवाएं, ईएसआर करवाएं, बीएसआर उसकी कराएं, ब्लड शुगर रैंडम को, यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स कराएं, सीरम कैल्शियम, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, और ड्रग्स की स्क्रीनिंग करें उसकी। नेक्स्ट। प्रोग्नोसिस का क्या होता है कि विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ फर्स्ट एपिसोड 40 से 50% मरीजों को क्या होगा कि उन्हें एक और मैनिक एपिसोड होगा पहले 2 सालों के अंदर। और जो साइकिलिंग है, यानी डिप्रेशन और मेनिया आपस में जिस तरह ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होंगे कि उसकी अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पुअर है, अल्कोहल अब्यूज़ है, साइकोटिक फीचर्स हैं, डिप्रेसिव फीचर्स आ रहे हैं, यानी वो नॉर्मल बेसलाइन नहीं टच करता बिटवीन मेनिया और डिप्रेशन, और मेल्स में और ट्रीटमेंट नॉन कंप्लायंस, ये तमाम इसके पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। इसी तरह जो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं उनमें जो मैनिक एपिसोड्स अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की हों, लेटर एज ऑफ ऑनसेट हो, अ फ्यू थॉट्स ऑफ सुसाइड हों, अ फ्यू साइकोटिक सिम्टम्स हों, कोमॉर्बिड चीज़ें ना हों, गुड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स और कंप्लायंस हो। अगेन आई टेक अ मोमेंट हेयर कि बिकॉज दिस इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू यू पीपल। आप लोग जब किसी के साथ कम्युनिटी में प्राइमरी केयर में काम करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है कि इस शख्स की सोशल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल कंडीशंस क्या हैं, फैमिली सपोर्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू टू एक्चुअली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स फॉर दिस पेशेंट। नॉर्मली जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं दे वेरी बिजी पीपल, वो किसी बड़े शहर में होंगे जहाँ पे मरीज बहुत मुश्किल से पहुंचेगा, बहुत देर बाद पहुंचेगा, बहुत थोड़ी देर के लिए देखेगा, और फिर वापस चला जाएगा, और वो उम्मीद ये करेगा कि दवाइयाँ कुछ कर देंगी उसके लिए। दवाइयाँ हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट अ वेरी लिमिटेड रोल एज वेल।
The most important factors are the psychological and social factors in patients with mental health problem. And you who are at the first line can make a big difference in the lives of these patients. And that is why we have designed this course for you. And that is why we are trying to work with you to see how we can change this for these patients. Next. अच्छा, क्वेश्चन और कमेंट्स में मैं क्विकली देख लेता हूँ कि अगर कोई अनएड्रेस्ड हैं अभी तक। मैंने कोशिश की थी कि साथ साथ ही एड्रेस करूँ। सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर वो डिनाई करे तो हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली आप उनकी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, यूरिन में भी होती है और ब्लड में भी होती है। हम इसके ऊपर एक अलग लेक्चर करेंगे एंड आई विल टॉक यू थ्रू देम। इसके अलावा तो डॉक्टर अस्कर ने एक वैसे कमेंट किया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी इंटेलिजेंट लोगों में क्यों ज़्यादा होती है। वो वैसे एक पंजाबी में सादी सी बात कहते हैं ना कि अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो हर चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं और ज़्यादा दिल पे भी लगाते हैं। अब अगर उनकी कोपिंग, रिजिलियंस, सोशल सपोर्ट, एडवर्सिटीज ज़्यादा ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग सिंपल माइंडेड, इजी गोइंग होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं वही होते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं। ऑन अ लाइटर नोट जो है, so obviously the people who think more, understand more, are more kind of affected by the realities and adversities on the ground as compared to people who are more easy going. लेकिन इसका एक दूसरा एलिमेंट भी है, मैं समझता हूँ कि जो है आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। हम जिसे तकवा कहते हैं, अल्लाह ताला पे भरोसा करना। जो भी शख्स हो, चाहे वो सादा हो, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो, चाहे बहुत अकॉम्प्लिश्ड हो, चाहे कम अकॉम्प्लिश्ड हो, अगर वो अल्लाह ताला पे भरोसा रखता है और उसे पता है कि मैंने चीज़ें करनी है लेकिन नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है, तो फिर भी ये चीज़ें कम होती हैं एंड दिस ऑल हेल्प्स यू। तो अगेन रिलीजन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर द पीपल हु फॉर होम इट वर्क्स रियली। लेकिन अगर आप ये समझते हैं ना कि मैंने ही सारा कुछ करना है और मैं करूंगा तो ये होगा, और जो गलत हुआ है वो भी मेरी वजह से हुआ है, और जो ठीक होगा वो भी मेरी वजह से होगा, तो जाहिर है यू विल बी वेरी होल्डिंग योर सेल्फ accountable to a very greater extent. So that's also an important aspect. Sir, are you here with us? Yes, I finally arrived, Usman. I'm so sorry. I was having some technical problems. I apologize. No worries, sir. आपने थोड़ा थोड़ा जो मुझे पढ़ाया था मैंने लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है. I hope I did the job well. Next. All right, all right. Next क्या है? Management. So sir, you can take it on from here, from the management of. So we have covered the clinical features of bipolar disorder, mania, hypomania, depression, and we have also covered the assessment, and now we are on to the management of bipolar disorder. So I can hand it over to you from here. Thank you, Dr. Usman. Can somebody help me with the slides? है यहाँ पे Dr. Usman? चलो, that's fine. So, Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. I apologize for being late to this session. I had an afternoon meeting जो late हो गई. मेरा नाम अली हाशमी है. I'm currently a professor of psychiatry and heading the department of psychiatry at King Edward, Lahore. Can we have a sound check, Usman or someone? आप सबको आवाज मेरी ठीक Loud आ and रही है? clear, sir. Loud and clear. Thank you, thank you, thank you. Just this morning, we had a meeting at our hospital with on a patient that we were working with. So हमारे जो Dean of Medicine हैं King Edward में, who heads the entire department of medicine, of which psychiatry is an allied department, we had a discussion just this morning about a number of things जिसके बारे में आप लोग तो already I'm sure familiar होंगे. The huge number of people with mental health issues, the very small number of psychiatrists and mental health professionals in proportion to that, and the crucial importance, the absolute importance of training non-mental health professionals in treating common mental health conditions. जिसमें of course आप सब लोग family doctors शामिल हैं, but also not just that, also providing mental health education to nurses, to basic healthcare workers like lady health visitors and medical officers and people who serve in the primary care settings. So without this, we really cannot make any kind of a dent in the mental health landscape or improve
mental health at a population level. उसके हवाले से I'm a little bit reluctant, a little bit hesitant, I might say, about talking about this very, very difficult topic, which is bipolar disorder. Even within the clinical mental health community, psychiatrist community, psychologist community, this is a difficult condition to diagnose, to manage, to treat. Fortunately, I'm sure Dr. Usman and his team have given you a very comprehensive overview of the epidemiology and of the prevalence and the incidence and so on. So this particular condition is not as common as some of the other conditions that we treat, but still yet, इसकी management है ज़रा complex होती है. So मेरा ख्याल despite the fact that I was a little bit late, I came in at the right time. जो management की बात हो रही है, so इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Sir, can I come in here briefly? जी please, Context आपकी बात को देने के लिए. So I think कि आपने बहुत अहम ये नुक्ता दिया, और जो मेरा की पॉइंट ऑफ एम्फोसिस था ना इनके लिए वो ये था कि जब इनके पास कोई पेशेंट आता है ना विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू टेल कि ये डिप्रेशन जो है ना ये बाइपोलर का डिप्रेशन होगा या यूनिपोलर. तो इनके लिए हिस्ट्री बड़ी अहम है टू अंडरस्टैंड दैट, और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, उसका बाकी सारी चीज़ें और प्रायर हिस्ट्री देखना और समझना उन तमाम चीज़ों को. इसी तरह ये जो डिप्रेशन है ये इसी तरह जो मेनिया या विद साइकोटिक फीचर्स के साथ आ रहा है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस या सब्सटेंस अब्यूज़. सो फ्रॉम अ प्राइमरी केयर पर्सपेक्टिव जब कोई शख्स मैनिक या डिप्रेसिव इलनेस के साथ आता है, फॉर देम एज जीपीज और फैमिली फिजिशियंस इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि हाउ दिस कैन टर्न इनटू अनदर कंडीशन एंड बी माइंडफुल ऑफ इट. सिमिलरली अगर ये किसी को फर्स्ट टाइम ट्रीट कर रहे हैं विद एन एंटी डिप्रेसेंट, सो बीइंग माइंडफुल it can actually trigger a hypomanic or a manic episode in a patient who could be a bipolar affective disorder patient, but they don't know it as yet. So that could be something. Similarly, someone consuming stimulants, substance abuse, alcohol could actually be also someone on a bipolar spectrum, and then they need to be mindful about this. And similarly, as a primary care physician, ये लोग लोगों के कॉन्टेक्स्ट को, लाइफ को, सोशल सर्कमस्टांसेस को बेहतर समझते हैं, और ये जो इसकी वेरिएशन होगी ना मूड की अराउंड द बेस लाइन मैनिक और डिप्रेसिव, they are there to actually able to document those things, liaise with the psychiatrist to actually work with them to see कि ये कैसे है. और इसी तरह जो ट्रिगर्स हैं, अर्ली वार्निंग साइंस हैं of a manic or hypomanic episode or person going into depression. So from a primary care perspective, from a patient management perspective, because as you say, this is difficult because it has a relapsing, remitting course of illness, it is important for them to be able to understand this, that if they are even treating a patient with depression or patient with who has some psychotic features, so it can be part of a bipolar spectrum disorder condition, and they should keep that possibility in mind. And last but not the least, patients on, for example, steroids, because steroid can also induce psychosis and manic, hypomanic features. So whenever they're prescribing, and then if they see something like this, so they need to be mindful about those things. So this was the kind of a perspective about bringing this in picture with the primary care physicians or the general physicians or the family physicians. Over to you, sir. Thank you, Usman. Actually, जो बातें डॉक्टर उस्मान ने की हैं, there are a couple of comments और उसी से वो टाइन होती हैं. So यहाँ पे नाम तो नहीं है. एक हमारे अटेंडी ने लिखा हुआ है, if a person is in a manic phase, it can be misdiagnosed as schizophrenia. Yes, absolutely, because people in manic phases can exhibit symptoms of psychosis and can be quite disorganized in their behavior and their mood and so on and so forth. Isme, just to go back to what was said earlier, the important point to understand is that it's very important as a family practitioner कि जब कोई, we understand the mental health community is very grateful to all of you for helping us. You are actually our first line of defense in terms of treating mental health conditions. लेकिन अगर कोई, if somebody shows up with symptoms of depression or anxiety or those kinds of symptoms which are extremely common, it's very important to not just automatically prescribe them an antidepressant without at least doing a minimal screening for bipolar disorder. जिस तरह डॉक्टर उस्मान ने कहा था अभी कि वो the depressive phase can be one part of bipolar type illness. दूसरा जो comment था, that also sort of speaks to, उसमें दो बातें एक अटेंडी ने की हैं. एक is the excessive use of caffeinated drinks for various reasons, including students who
stay up at night. और दूसरा जो aspect है वो नींद का aspect है, sleep aspect. So sleep deprivation and use of caffeine drinks can also present with symptoms which can mimic manic symptoms or symptoms of bipolar disorder. So slide आपके सामने है. You know, I think it's already been talked about in terms of how you can potentially diagnose, and let me re-emphasize that diagnosing any mental health condition accurately is absolutely the first step before we begin treatment. So oftentimes in our particular setting, in Pakistan as a low-income country where we have huge crush of patients, बहुत ज़्यादा patients होते हैं, time बहुत थोड़ा होता है, we are all extremely busy and various different things. So sometimes the tendency is to not take enough time to establish a diagnosis. I think इसमें आई सीम टू रिमेम्बर जब हमारा लास्ट सेमिनार हुआ था उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी कि बहुत सारे एविडेंस बेस्ड स्क्रीनिंग टूल्स, शॉर्ट स्क्रीनिंग टूल्स मौजूद हैं which can within a few minutes you can get a good idea of what the diagnosis might be before you begin treatment. So it's important to at least, or even in the mental health setting, bipolar disorder is difficult to diagnose. I've missed my share of people with bipolar disorder or misdiagnosed them and so on and so forth. So अगर once you establish the diagnosis, which is the most important first step, फिर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, multiple conditions, I think I heard steroid-induced mania and so on, but there's a huge number of medical conditions, so thyroid conditions, all kinds of hormonal conditions, metabolic conditions, all kinds of conditions, physical conditions, medical conditions, which can mimic symptoms of bipolar disorder. तो उसका एक baseline medical workup जरूर करवा ले, because that's very very important. बहुत लंबे चौड़े टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक मेडिकल वर्कअप, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज, आरएफटीज, वो जरूर करवा लें. अगर इफ यू थिंक इट्स इंडिकेटेड तो हेड स्कैन भी करवा लें. सो आपका जो 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 द कॉमन मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आर एक्सक्लूडेड, एंड आफ्टर दैट this is what the slide is talking about. Notice the first bullet point, which is again, before starting any medication, before starting any treatment, you need to make an effort to establish a therapeutic alliance with the patient. I think इस पे बात hopefully पिछली presentation में हुई होगी कि उसके procedures क्या हैं, उसके mechanism क्या हैं. But it's very important, especially for a person who's both in depression but in mania, but especially in mania, the person who's disturbed, who may be psychotic, who may be manic. The important thing in terms of beginning treatment is to have some level of trust developed with the patient before you prescribe, because people with mania, clearly one of the things that they suffer from is difficulty understanding, जिसको हम lack of insight कहते हैं, कि उनको तो they don't think there's anything wrong. Their family has brought them because they're not sleeping, they're agitated, they're aggressive, they're overspending, doing all these various things that can be harmful or dangerous or otherwise not good for them. They think they're okay because their mood is elevated and so on. So उनके साथ एक therapeutic alliance बनाना जो है वो बहुत जरूरी है. Educate family को भी करना, patient को भी करना, और treatment compliance, treatment को start करना और फिर treatment से compliance करना जो है वो बाद में आता है. थोड़ा आगे चलें तो you notice what I just talked about, a regular pattern of the. Can we go back to the last slide, please? So you notice the जो fourth to last bullet point है, promote a regular pattern of activity and wakefulness. ये मैंने पहले बात की थी कि नींद का जो मामला है, sleep deprivation can be a very common reason for manic-like symptoms. I think if most of you are doctors here, we've all experienced post-call hypomania or post-call euphoria. जब रात की हमने ड्यूटी की होती है, पूरी रात जागना पड़ता है, तो अगले दिन you get a very faint taste of what a person in a manic syndrome might feel like. You feel activated, you feel buzzed, you feel excited, all that, you feel irritable. So sleep deprivation जो है वो बड़ी एक strong factor है for precipitating mania, and conversely, and loss of sleep or reduced sleep is a core symptom of mania. And उसी को देखते हुए, restoring sleep is of course an important part of recovering from mania, recovering from bipolar disorder. Next slide. There's lots and lots of material to cover, so I'm going to try and just highlight the important thing that I think would be useful to you in your setting as primary care physicians.
Medications की बात मेरे ख्याल पहले भी हुई होगी, आगे चल के थोड़ी सी आ जाएगी. And of course, bipolar disorder is a very broad condition. So in just one seminar, it's not possible to cover all aspects of it, but we'll make an effort to talk about the important parts of it. Second bullet points, फिर insomnia की बात कर रहा है, उसकी बात हमने थोड़ी सी कर ली है. मेरा ख्याल दवाइयों की बात, I reviewed the slide last night. दवाइयों की बात आगे आ रही है, so we'll skip the benzodiazepines and the antipsychotics. और therapeutic alliance की बात हमने already कर ली है. Keep in mind कि acutely manic patients, a patient in mania or even a patient in severe depression, when the depression is bad enough to where they have suicidal ideation or they may develop psychotic symptoms, उनके साथ therapeutic alliance बनाना is very complicated, very difficult, because they are not able to think correctly, they are not able to reason, they are not able to, their emotional regulation is completely off, so it's very difficult, but it's important to take the time. Or of course, if the person is very acutely sick, then the therapeutic alliance, you need to start by building a therapeutic alliance with the family or the caregivers. और वहां से फिर आप start करके, and then eventually once the person is their mood is stabilized somewhat with the help of medication, then you can move on to. But that therapeutic alliance is actually the basis of any treatment success, not just in bipolar disorder treatment, not just in depression treatment, but any illness, any किसी भी चीज की आप treatment कर रहे हैं, you know, you all already know this, that a therapeutic alliance is the key to treatment success. Next slide. Hospital admission की बात करना complicated इसलिए है because just as there is a dire shortage of psychiatrists and properly qualified psychologists and mental health professionals, there is also an acute shortage of good quality psychiatric inpatient services. So अगर hospitalization की हम बात कर रहे हैं, तो then the question of course would be कि कहाँ पे admit किया जाए, हमारे पास resources कौन सी हैं admission के लिए. पब्लिक सेक्टर में कोई रिसोर्सेज मौजूद हैं फॉर पीपल हु आर बिलो सर्टेन इनकम लेवल. प्राइवेट सेक्टर में क्या रिसोर्सेज हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उसको अफोर्ड किया जा सकता है. बट अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सारे सिम्टम, risk of harm to self or excessive use of drugs and alcohol, sexual promiscuity, these are indications for psychiatric hospitalization. I found in my clinical practice over the course of the last 15 years or so in Pakistan, that except for the most severe cases, you can make an attempt to manage the patient at home, provided there's some good family support. तो अगर घर में लोग मौजूद हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि गाड़ी लेके वो निकल ना जाए अकेले या उस तरह की चीजें, तो घर पे आप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, गिवन कि आपके पास साइकेट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन की रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. But of course, if you look at the evidence base says कि अगर आपको risk assessment पे आपको लगे कि ये चीजें बहुत ज्यादा aggravate हुई नहीं है, तो the answer is psychiatric hospitalization, because in that setting you can keep the person safe and begin treatment. Next slide. ये वो सारी चीजें जिसकी मैंने बात की, जहाँ पे it is important to consider hospitalization. मैंने पहले बात कर दी है कि कहाँ एडमिट करना है, अफोर्ड वो कर सकते हैं कि नहीं, आपके पास कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कैपेसिटी है कि नहीं. हमारे आई थिंक सर्टेनली इन द बिगर सिटीज, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, सम ऑफ दीज प्लेसेस, मोस्ट प्लेसेस हैव फैसिलिटीज इन द पब्लिक सेक्टर जहाँ पे आपको यूजुअली बेड मिल जाते हैं. प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन की facilities मौजूद हैं. The cost of course is there. In general, the level of care, the level of clinical expertise in general is a little bit better in the public sector hospitals, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही होती है, क्लासेस चल रही होती हैं, डॉक्टर ज्यादा होते हैं. प्राइवेट सेक्टर में you have to be a little bit careful in terms of screening carefully कि वहाँ पे level of care क्या है, quality of care क्या है, वहाँ पे qualified psychiatrists मौजूद हैं या नहीं है, how often are they there, and so on and so forth. ये वो सब चीजें आपके सामने बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें you should recommend psychiatric hospitalization. अब उसमें कई दफा ऐसे होता है कि फैमिली नहीं मानती, पेशेंट नहीं मानता, कॉस्ट का इशू होता है, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन आपको रेकमेंड कर देना चाहिए कि जी अब उनकी तबीयत इतनी खराब है कि अब उनको घर पे मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. इनफैक्ट नॉट जस्ट मुश्किल हो जाएगा, बट लुक एट द फर्स्ट बुलेट पॉइंट कि अब उससे नुकसान होने का भी खतरा है. So they can harm themselves, harm other people, so on and so forth. ये सारी वो चीजें.
यहाँ पे एक difficult सा left लिखा हुआ है catatonia, which is basically catatonic symptom, which basically means कि the person is so deteriorated, they're so unwell that they may even have stopped moving, they may have stopped eating, they may have stopped drinking. So basically, catatonia is a more severe version of psychomotor sort of retardation. Next slide. ये बात हमने थोड़ी सी और कर ली है कि हॉस्पिटल जो है वो उसमें एडमिट करके हम किस तरह से सूटेबली मैनेज कर सकते हैं. This is what I pointed out earlier कि hospitals हमारे are not ideal places for treatment for a number of reasons. Even हमारे जो you know जो private sector में छोटे छोटे hospitals हैं, you know they're very cramped, छोटी जगह है, वहाँ पे कोई activities नहीं है, कुछ तरह से नहीं है. Public sector में of course those of you who work in public sector hospitals already know infrastructure की issues and so on and so forth. But ये सारी वो चीजें जो लिखी हुई हैं जहाँ पे आपको ये चीजें these are sort of the minimal standards that need to be available if you admit a person to the hospital. और दो तीन, you know, there's 2 or 3 major benefits or major reasons for a person being in the hospital. The first, of course, is that you can make sure that they are taking their medications as directed and on time. Especially if a person is either manic or very, very depressed, this is a serious concern because they will often refuse medication. They will, you know, even if they agree, they might दवाई वो मुंह में डाल लेंगे फिर बाद में थूक देंगे, so उनको दवाइयाँ देना मुश्किल हो जाता है. That's one part. The other part is a safe environment. A person who's at risk of suicide or risk of harming themselves, so on and so forth. And यहाँ पे जो last bullet point है, if the person is absolutely refusing, they're doing things which are dangerous to themselves, to others, but they are absolutely refusing admission, then of course legally, अगर आपने किसी को restrain करना हो, so that also is something that can be done in a hospital environment. But again, it has to be some place which is safe and somewhere where they can be restrained safely without risk of harm to them or to other people. Next slide. थोड़ी सी आई थिंक आगे चल के भी कुछ ट्रीटमेंट पे भी स्लाइडें आ रही हैं. This is a lot of material that you are expected to study and master, but hopefully these slides or something equivalent of the material will be shared with you so that ताकि आप आराम से इसको study कर सकें, and then you can you know refer back to it if you need to again. So यहाँ पे पहले बात हो रही, before we move on to I think specific management strategies, we are talking about symptoms which pose an immediate risk to life, right? So life-threatening symptoms or life-threatening conditions. So psychotic symptoms हो सकते हैं जिसमें they are you know they're exhibiting symptoms which can cause them injury or cause injury to other people. They are psychotic, hallucinating, delusional, अपने आप को चोट लगा सकते हैं, दूसरों को चोट लगा सकते हैं. Catatonic symptoms की मैंने अभी आपको briefly बात की थी, where they are basically not moving, not eating, not drinking, and can thus become at risk of becoming dehydrated, developing infections, you know, losing weight. You know, so that also can become a medical problem if it's prolonged. Suicide, of course, is self-explanatory. कि अगर उनकी risk बढ़ चुकी हुई है, oftentimes suicide attempt वो कर चुके होते हैं, जिसके बाद वो admit होते हैं. A risk of violence to other people, depending on what they're experiencing. They're exhibiting paranoia towards family, other members. Substance abuse disorder is a very important component of treatment of bipolar disorder, and also something that should be जब आप initially workup करेंगे, labs करेंगे, baseline workup करेंगे, तो उसमें कुछ basic substance abuse का workup भी होना चाहिए, because many substances, when a person is intoxicated on certain substances, for example, आजकल unfortunately हमारी communities में there's a high incidence of a substance which is commonly called ICE, or technically methamphetamine or amphetamine related compounds. So if you're intoxicated on that can seem like mania. Withdrawal from certain substances can also appear as mania or depression. So substance related disorders को बहरहाल you have to consider during acute treatment. और उसके अलावा it's quite common, हम जो काम करते हैं, comorbidity is the rule rather than the exception. So most of the people that we see tend to have 1, 2, 3 different comorbid conditions. So you can have more than one condition coexisting in a person at the same time. So a person with bipolar disorder who also has substance use,
a person with depression who also has medical problems, a person with mania who also has a previous history of anxiety disorder, and so on and so forth. Next slide. यहाँ ये बात हमने थोड़ी सी कर ली है. Clearly, you can't screen for every possible medical condition which can lead to symptoms like mania, or which can lead to depressive symptoms, or which can coexist with these conditions. लेकिन जिस तरह से आप, when a person comes in and you assess them for cardiac illness or pulmonary illness or GI illness, and then you do some basic screening for other conditions that may coexist on the side. So यहाँ पे भी the principle is still the same. You do a screening on the history for common conditions such as thyroid conditions, such as cardiac conditions, such as other kinds of conditions. Medication side effects, वो तो खैर when they come in, you'll find out about that. Steroids की बात अभी already हुई थी. So all of these things should be at least screened for, and I think in your routine practice जब आप करते हैं तो ये already आप कर ही रहे होंगे. But a person who comes in with symptoms of depression or mania or any combination of that in the context of a bipolar disorder, we also do this. So जब हम treat करते हैं इनको, we also do this, but we have the advantage that most of these people have already been screened through your system. They have already seen their family doctor, more than one doctors. Maybe they've seen a specialist, they've had all the laboratory workup, and also by the time they get to us, they already have a big file in which there's lab tests and all this. So I don't have to reorder these because these have usually already been done. But आपकी सेटिंग में, प्राइमरी केयर सेटिंग में, या जब फर्स्ट टाइम वो आते हैं तो ये सारा कुछ उन्होंने खुद से नहीं करवाया हुआ होगा. सो इट बी पार्ट ऑफ योर जो केयर आप दे रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही होगी कि आप कुछ बेसिक वर्कअप करवा लें टू रूल आउट सम ऑफ दिस कॉमन मेडिकल कंडीशन. नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक स्पेसिफिक we are going to talk a little bit just very quickly, and all of this is something that you can refer back to, and some of this I think has been taken from the evidence-based guidelines that are available. Or in fact, the good thing is that for primary care doctors, there's a lot of evidence-based guidelines put out by various different international agencies, including the World Health Organization. इसमें simplified करके flow chart. Okay, fine. So I was about to say this looks like MH gap. So mental health gap जो program है WHO का, ये उसी में से इन्होंने लिया हुआ है, which is available in a very nice form in text version. Also a very nice app that you can download on your phone, which will walk you through all of this. Mental health gap, MH gap, GAP. उसको अगर आप सर्च करेंगे Google Store पे या अपने Apple Store पे, तो you can see the app जो आपको मिल जाएगी, ये सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा. All of these steps you can find in that app. So यहाँ पे this first slide is talking about treating an actual manic episode. Very simple protocol. अगर एंटी डिप्रेशन चल रहे हैं जो मीनिया को प्रेसिपिटेट करते हैं, उसको बंद कर दें. 3-4 primary intervention strategies हैं in terms of medication. So you have lithium, which is maybe it's available now, but it's been in short supply. उसकी कोई production के और distribution के market के issues से, but valproic acid, carbamazepine, and then you can combine those with various different antipsychotic medications जिनमें बहुत सारी हैं. There's 7 or 8 of them. उसमें and you can combine all this combination with a benzodiazepine for behavioral disturbance. और उसकी इसमें अगर आप डोसिंग देखना चाहते हैं तो डोसिंग के भी स्टैंडर्डाइज्ड एल्गोरिथम्स और स्टैंडर्डाइज्ड टेबल्स बने हुए हैं which will give you a dose based on a person's body weight and so on and so forth. So it's easy enough to look that up. और उसमें और इसकी स्टैंडर्डाइज्ड वर्कअप्स भी होते हैं. If you want to start a person on lithium or valproate or carbamazepine, then there are some basic laboratory workup that should be done beforehand, which are also fairly standardized. So उसको अगर आप reference chart को अपने साथ रख लें तो every time you go to treat a patient, पहले आप वो करवा के उसके बाद फिर you proceed with the medication. आगे जो बातें हैं वो सारी supportive treatments हैं which you can combine with the medication either in an outpatient setting or in an inpatient setting. कुछ की बात इसमें already हो गई है जिससे हमने पहले बात की थी, safety of a person, security of a person, so on and so forth. और उसके अलावा बाकी चीजें it's important अगर आप inpatient outpatient जहां भी कर रहे हैं, all of these illnesses, most of the illnesses that we treat in the mental health setting are chronic illnesses. So it's important that you reinforce the importance of regular compliance, number 8, and then also regular follow-up, because we're talking about treatment. So it's more like treating hypertension, more like treating diabetes, not like treating a simple infection कि आपने
6-8 दिन ट्रीटमेंट की and then the person can go. You really need to emphasize every time you see them, starting from the first visit, that they need to come see you on a regular basis for at least a few months or a few weeks until the symptom resolves, and then they can just do it every so often. Chronic conditions होती हैं, 1-2 दफा आएंगे, तबीयत बेहतर होगी, छोड़ देंगे, फिर खराब होगी, उससे प्रॉब्लम ज्यादा बनती है. नेक्स्ट साइड. I'm not going to go through each of these boxes. ये सिर्फ आपको एल्गोरिदम आपको बता रहा है कि अगर यहाँ पे है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तो क्या करना है, so on so forth. इसमें I think आप लोग when you use this algorithm, and I think इसमें mental health gap को अगर आप थोड़ा स्टडी कर लें, I personally like the app. अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा. इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो पहले 2-3 स्लाइड पहले हमने बात की थी, जो अक्यूटली डेंजरस कंडीशन है, जिस तरह अगर आप बिल्कुल बॉटम पे देखें जहाँ पे रेड में आउटलाइन हुआ हुआ है, देयर इज इमिनेंट रिस्क ऑफ सुसाइड, वो चीज है. या अगर आप अपर राइट कॉर्नर में देखें, मैनेजमेंट, वहां पे भी रेड लाइन हुआ हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एग्रेशन या एजिटेशन. तो ये चीजें जो है, इन पे आपने फोकस जरा ज्यादा करना है. और ये आपको, आई एम श्योर, जब जब वो पेशेंट फर्स्ट टाइम ही प्रेजेंट करेगा तो फैमिली खुद ही बता देगी कि जी इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, और दे बिकेम एजिटेटेड, दे दे हिट समवन, कुछ समथिंग लाइक दैट. तो उसमें अगर वो मामला चल रहा है तो फिर आपने उसको प्रायोरिटाइज पहले करना है. And then of course and of course उसमें सबसे important चीज होती है, the first question to answer is, can this patient be managed inpatient, I mean outpatient, or do they need to be admitted inpatient? So ये सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आपकी आगे चल सकती है. और उसके भी स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि अगर रिस्क असेसमेंट में आपकी है कि बहुत ज्यादा वो एजिटेट है, then they probably need inpatient. We've already talked a little bit about the inpatient part, कि वो कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, पेशेंट की रिलक्टेंस है, फैमिली की रिलक्टेंस है. But if you feel that they are at risk of harming themselves, harming someone else, aggression, agitation, you should have a conversation with the family कि जी इनको आप दाखिल करवा लें, which of course means that you need to be familiar with what the resources are if an inpatient admission is required. आपकी जो community है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या resources available हैं. So that's something that should be part of your knowledge base, that what inpatient, potential inpatient resources are available in case a person shows up in this condition to your clinic. Next slide. ये थोड़ी सी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, ये थोड़ी सी रेपिटेशन हो जाएगी, लेकिन री एम्फसाइज इस चीज को कर देते हैं कि मेडिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड्स को इकट्ठे आपने एड्रेस करना है. जो इफ यू लुक एट द स्मॉल, जो छोटी उंगली है हाथ की, हमने बात ऑलरेडी थोड़ी सी दवाई की है, बट जो बाकी जो उंगलियों पे जो बातें हो रही है, साइको एजुकेशन की बात मैंने सबसे पहले की थी कि आपने फैमिली को जरूर एजुकेट करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है. बाकी चीजें जो है वो फिर एज द ट्रीटमेंट प्रोग्रेसिव, स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है, डेली एक्टिविटीज कैसे मैनेज करनी है, कम्युनिटी में कैसे उनको हैंडल करना है, ऑल दैट. let me also re-emphasize that bipolar disorder, if appropriately managed, is not at all an illness that can't be treated effectively. So I have lots and lots of people that I treat with bipolar disorder who lead perfectly normal lives. और दवाई अपनी लेते हैं, फिर दवाई हम कम भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप, it's a chronic illness like any chronic illness. तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को और कोई chronic illness है, they lead perfectly normal life. वो अपना काम करते हैं, घर में होते हैं, जाते हैं, बेगम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या मियाँ के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, जो भी है. सो देयर इज नो कॉज फॉर एनी काइंड ऑफ पेसिमिज्म कि जी ये जो लोग हैं, जिससे हमारा एक, अनफॉर्चुनेटली वी डील विद दिस ऑल द टाइम, एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि जी साइकेट्रिक इलनेस तो ठीक नहीं होती है, साइकेट्रिक इलनेस के पेशेंट तो रिकवर नहीं करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वी हैव इलनेसेस, जिस तरह सब स्पेशलिटीज में इलनेसेस होती हैं. फॉर इंस्टेंस सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें एक प्रोग्रेसिव कोर्स होता है, फंक्शनिंग लिमिट हो जाती है, वगैरह वगैरह. बट एक स्टडी, मुझे, मैं डायरेक्टली तो नहीं कोट कर सकता, मुझे इसका रेफरेंस याद नहीं है. Many years ago I read about a study which talked about how the overall morbidity and the overall burden of psychiatric illness was quite comparable to any other chronic illness like hypertension and diabetes. जितने लोग hypertension diabetes के ठीक हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं अपनी लाइफ, उतने साइकाट्री वाले भी कर लेते हैं. बल्कि साइकाट्री का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, थोड़ा बेहतर था कि हमारी जो इलनेसेस है उसकी रिकवरी, अगर प्रोवाइडेड, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोवाइडेड
अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उनको मिल रही है एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उनको अवेलेबल है, एक्सेस उनको अवेलेबल है, जो कि हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में और लो इनकम कंट्री में अभी भी प्रॉब्लम है फॉर अ नंबर ऑफ रीजन, इसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। सो इस पे आपने फोकस रखना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो ट्रीटेबल कंडीशन है, रिकवरेबल कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है डेफिनेटली, लेकिन किसी किस्म का लिमिट पर्सन की जिंदगी में जरूरी नहीं होता कि हो, दे कैन रिकवर फ्रॉम इट एंड दे कैन हैव परफेक्टली नॉर्मल लाइफ एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल। थैंक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I won't go into detail of that. ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो आपको बता रहा है कि आपने आपने क्या ट्रीटमेंट इनिशिएट करनी है, उसमें क्या चीज आपने ऐड करनी है, और उसमें सारा एविडेंस बेस उन्होंने कोड भी किया हुआ है। थोड़ी सी बात मैंने पहले कर दी है कि जो ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करनी है उससे पहले आपने क्या मॉनिटरिंग करनी है, लैब मॉनिटरिंग, उसके दौरान आपने क्या लैब मॉनिटरिंग करनी है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एज यू कैन सी there is very strong evidence based recommendations, इवन दवाइयों के डोजेज की जो लेवल्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने वैल्प्रिक एसिड इस्तेमाल करना है तो इतने मिलीग्राम पर केजी आप यूज कर लें, अगर आपने कार्बामेजेपिन यूज करनी है तो इस लेवल तक, सीरम लेवल तक आप उसको ले जाएं। सो अनदर कॉमन मिसकंसेप्शन कि जी साइकाट्री की जो दवाइयां हैं उनको मॉनिटर करना मुश्किल होता है। इफ यू यूज अप्रोप्रिएट करंट साइंटिफिक एविडेंस, और ये कोई बहुत नई गाइडलाइन नहीं है, 25 ईयर्स अगो जब मैंने अमेरिका में ट्रेनिंग की थी उस वक्त हमें उस वक्त भी अवेलेबल थी। So there's lots and lots of good data guiding your management। इससे पहले दो मैंने शुरू वहां से किया था कि सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपनी असेसमेंट को प्रॉपरली कर लें, डायग्नोसिस को अपनी लॉक डाउन कर लें, मेक श्योर दैट यू यूज वट एवर स्केल्स यूर यूजिंग, वट एवर टूल्स यूर यूजिंग, because if that part is not done correctly, the assessment and the diagnosis, then all of this becomes a problem. Wahan se, if you start correctly from history taking and diagnosis, then you move into this particular part, then you get very good outcomes. You get excellent outcomes. People recover. They go on and have good outcomes in terms of illness. Next slide. ये वही बहुत सारी दवाइयां इसमें से, इफ यू गो डाउन द लिस्ट, सम मेडिकेशन आर रिलेटिवली न्यूअर जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस कैरप्राजीन इज अ वेरी न्यू, और नॉट वेरी न्यू, इट्स अ फ्यू इयर्स ओल्ड, बट अभी पाकिस्तान की पहुंची नहीं है दवाई। Most of the asenapine is a little bit hard to find. It's not been released widely in Pakistan. Most of the rest of them are easily available in Pakistan. And as I mentioned, आप जैसे कि आपके सामने ही है कि इनकी डोसिंग जो है वो बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि किस तरह से आपने इसको डोज करना है, किस लेवल पे डोज करना है, कहाँ तक लेके जाना है, क्या करना है, so on so forth. And I hope this is all. If all of this is out of mental health gap, which it looks like it is, then all of this is available to you already. आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और मेंटल हेल्थ गैप की जो ऐप है वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये मैंने ना ऐड की थी, जो हमारे पास नाइस की, यूके नाइस की गाइडलाइंस है ना, एंड आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के बट में इनमें से कुछ दवाइयाँ नहीं मैसर होंगी, बट व्हाट द एम वाज कि इनको एविडेंस बेस का पता हो, एंड यू कैन हाईलाइट कि जैसे हम वेलप्रोइड ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसी तरह हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, कोटायापिन हमारे पास ज़्यादा मौजूद है। सो यू कैन हाईलाइट कि इसमें से हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, लेकिन बट आई वांटेड कि इनको एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस का ज़रूर पता हो कि एविडेंस क्या कहती है और क्या चीज़ रिकमेंडेड है, बट यू कैन ऑल्सो ऑलवेज हाईलाइट कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या अवेलेबल है। Okay, so let me say a few quick words about that. I'll just go down the list very quickly. Lithium is the oldest medication in this list, one of the oldest. Extremely effective medication, but very hard to find in Lahore or in Pakistan because of some supply chain manufacturing issues. थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, as most of you already know. In addition to all the challenges we face, we also face the challenge of pharmaceutical supply chain disruptions. कोई दवाई कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, so on and so forth. But anyway, lithium is a very effective medication. Valproic acid or valproate, sodium valproate, बहुत सारे नामों से आती है. We won't talk about that because in Pakistan the pharmaceutical industry is quite deregulated. So you have one medication might be available, 20, 30, 40 different names. So I always encourage my PG residents to work with generic names simply because it's less confusing. So valproic acid, your sodium valproate, your divalproic sodium is probably the most commonly used simply because of the availability and its effectiveness also. The further down, जो 5-6 दवाइयाँ हैं, those are generically called antipsychotic medication.
although calling them antipsychotics is not quite accurate because they also work in mania and they also work in depression in various different doses. Aripiprazole, very commonly used, good medication because it has a slightly lower risk of side effects. Asenapine or cariprazine are not yet available in Pakistan widely, so we don't use these much at all. Agli jo teen hai, olanzapine, risperidone, and quetiapine have been available for a long time in the US and in Pakistan also, and they have varying levels of dosing. I won't go into the pharmacological profiles because वो बात लंबी हो जाएगी. Haloperidol is, of course, one of the oldest available medications we have. It dates back to the 1950s. Still, very commonly used, very effective, although it does have different kinds of side effect burden. और जो आखिरी दो दवाइयाँ, of course, they are benzodiazepines. Lorazepam, for some reason, is very, very hard to find in Lahore, at least. I'm not sure where it's like in Pindi. Very good medication. We used it a lot in the US. For some reason, it's very difficult to find in Lahore. I'm not sure कि बाकी शहरों में क्या सूरत हाल है. But benzodiazepines, we have other options also. We have diazepam, we have clonazepam is probably the most commonly used. We have bromazepam, बाकी और भी होती है. Next slide. अब ये पर्टिकुलर आई थिंक बात हो रही है कॉम्बिनेशंस की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इसकी बहुत सी यानी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं कि अगर ये हो तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, इस तरह से हो तो इस तरह से कर सकते हैं. You've probably already noticed in multiple slides the discussion about if a person presents with symptoms which are suggestive of mania, to always reduce or stop antidepressant medications. So वो तो बहरहाल होना ही चाहिए because those are one common reason. So antidepressant induced mania is a very common or fairly common condition that we treat in our particular practice. I think one of the reasons for that is because there are lots and lots of people with depression who present in your primary care practices. Like I said, आज मैं हमारे जो Dean of Medicine है, he's an internal medicine physician, उनसे बात हो रही थी, तो आपकी practices में, primary care practices में depression बहुत ही common है. And so I think most of you are quite familiar with using sertraline or paroxetine or fluoxetine for depression, or escitalopram. The problem, of course, is that you don't know which one of these patients you may not have seen them before, or perhaps you have, and previously you were not treating their depression. You don't know which one of these patients has the potential for switching into mania with antidepressant treatment. So oftentimes ये होता है, जब हमारे पास लोग आते हैं कि जी जब उन्होंने प्रेजेंट किया प्राइमरी केयर सेटिंग में, they were in depression and they were treated appropriately by giving an antidepressant. And then when they switched to mania, then of course, the primary care doctor didn't know what to do. And then they came to our clinic and then we had to do an assessment, found out perhaps it was bipolar disorder. So antidepressant दवाई को बंद करना जो है, ECT treatment यहाँ पे जिक्र हुआ है, पहले भी थोड़ा सा आया था. It's an effective treatment, but difficult to find. Not very commonly available, even in the larger cities. लेकिन treatment बहुत effective है. Antipsychotic medications की थोड़ी सी बात हुई है. We've talked about that. एक उसमें important point ये है कि जो हमारी second generation antipsychotics हैं, जिसकी पहले बात हुई थी, olanzapine, risperidone, none of them are available in an injectable form. So for a person who is refusing medication, who's acutely agitated, who will not take medication, you often have to go back to haloperidol, which is available in an injectable form. अब हम सुन रहे हैं कि risperidone long-acting injectable medication or long-acting injection has been approved, which would be the first one in Pakistan. There are some older versions of antipsychotics available, लेकिन second generation में कोई available नहीं था. अभी भी वो मार्केट में नहीं आया. अभी अमेरिका में तो हम लोग उसको 25-30 साल पहले यूज किया करते थे, but यहाँ पे पहुंचे नहीं. Primarily, I think the issue is cost. It's quite expensive. Even back in America, it used to be very, very expensive. Hopefully, we'll get that, so we'll have one more option. लेकिन oftentimes in an acute setting, आपको injectable haloperidol use करनी पड़ती है. अगर वो दवाइयाँ खा लेते हैं, तो then it's easier. Then you have more options. Next slide. ये इसकी ऑलरेडी बात हो गई है. We are talking about various combinations. मैंने पहले बात की थी. Compliance is extremely important. People with mania and people with severe depression will frequently refuse medication, refuse that they have an illness, have very poor insight into their conditions. So सबसे पहले तो जाहिर है कि आपने compliance को ensure करना है. And if you are having difficulty doing that in an outpatient setting, then you may
want to consider putting them inpatient. Next slide. Individual जो mood stabilizer उनकी बात हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया that you know lithium has always been one of my favorite medications. One of the biggest advantages of lithium is that because it is an old medication, it is quite cheap, relatively quite cheap. In fact, interestingly, आपको हैरानी होगी, one of the reasons for its non-availability in the last year or so, year or 2 years, is because it is so cheap, so it's less profitable for the pharmaceutical company. And when it became, and lithium is a unique medication, it can't be replaced by valproate or other medication because it has sort of a unique pharmacological profile. So difficult to find nowadays. And then the other thing is lithium is basically a salt. It's like sodium. It's a salt. So हमारा जो weather है, lithium is people who are taking lithium are sensitive, are prone to developing side effects related to dehydration. So in the summer months, it becomes difficult to use because अगर उनको dehydration हो जाए तो lithium से problem हो सकती है. But it's an excellent medication, high response rate, इसके multiple फायदे हैं. In addition to mania में इसकी anti-suicidal properties भी हैं. It can also boost, serve as a second line antidepressant, so on and so forth. It's just that it's थोड़ा सा lab monitoring की requirement होती है, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है use करने में. बाकी valproic acid भी है, carbamazepine भी है. Benzodiazepine, of course, only for the short term, not long term because of dependence issues. Next slide. I think, and let's go and skip that. We are going into the last sort of 10 or 20 minutes of today's session. So isko aap apne you know, when you have time, you can take a look at these. मैंने थोड़ी सी points इसमें touch की हैं, but ये आगे, I think the next few slides will be about individual drugs, so you can study them. अगर कोई question आपका हो तो आप इसमें आप chat box में आप डाल लें. Next slide. Valproic acid का मैं थोड़ा सा एक comment आपको ये बता दूं. If you start a person on valproic acid, you know, दो तीन चीजें उसमें आपने एहतियात रखना. I'm always a little bit, it's a good medication, it's very easily available, commonly used. It does have the potential for a little bit of weight gain, which becomes a problem. और वो लिखा ही हुआ है, जो आप अगर सेंटर में आप जो कॉलम है इसको आप देखें, वेट को मेजर हम कर लेते हैं. In addition, इसकी कुछ it does have some side effect burden in terms of potential liver toxicity and potential toxicity to other organ systems. So इसकी कुछ recommended lab monitoring है जो बहरहाल होनी चाहिए. My concern usually is I have a fair number of young women or younger women or women of childbearing age who have bipolar disorder, and you want to be very careful using this particular medication for. It is also used for other. It's approved for multiple other conditions. So it's a first line anti-epileptic agent. It's also used for headache prophylaxis, also used for other kinds of things. Lekin for our women patients, the weight gain can become problematic in terms of अगर weight gain ज़्यादा हो तो फिर polycystic ovaries का problem शुरू हो जाता है. And you never want a childbearing woman taking valproic, a woman of childbearing age, woman who's potentially of childbearing age, taking valproic acid without a strong discussion about contraception and pregnancy planning, right? So because it's a known teratogen, you never want a woman who's taking valproic acid to become pregnant and for you to not know about it. So अगर आपने किसी bipolar disorder female patient में use करनी है, and she's a woman of childbearing age and she's married or in a relationship, you must have a discussion about effective pregnancy prevention. Because you do not want a fetus exposed to valproic acid in a woman. मर्दों में तो वो issue ज़ाहिर नहीं उस तरह से होता, दूसरे side effects हो सकते हैं. But this is something that I always worry about. This is something that we always strongly monitor when we use it for our woman patients. Next slide. Carbamazepine is an excellent medication. इसके दो तीन problem है, which is because of which it's not generally used first line. एक तो carbamazepine is a very strong inducer of cytochrome P450 liver enzymes. So carbamazepine tends to increase the metabolism of multiple other medications, including itself.
सो उसके डोज को आपको कॉन्स्टेंटली कई दफा एडजस्ट करना पड़ता है. दूसरा, इज अ वेरी स्मॉल रिस्क of sometimes minimal rashes, but also major dermatological abnormality, rash, budke, and there's a small chance of it becoming something serious like a Stevens-Johnson syndrome. It's a very good medication if used appropriately and if you use the appropriate monitoring for it. जो कि लिखी हुई है क्या monitor करना है आपने. दवाई बहुत अच्छी है. Never has become as popular as valproic acid or lithium for the reasons that I just mentioned. So, but इसका भी recently availability issues आ रहे थे. We were having a hard time finding it in the market. Short हो रही थी. वो जो मैंने पहले supply chain issues की बात की है जो पाकिस्तान में हमें रहते हैं. Next slide. This is a very complex problem here because a person with bipolar disorder who becomes depressed, you can't give them antidepressants because they can become manic. They become quite depressed. So और उसमें commonest complaint जो हमें patients की होती है वो होती है कि डॉक्टर साहब आपने मेरा मेनिया तो ठीक कर दिया है, अब मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा. उस डॉक्टर साहब इससे तो बेहतर था कि आप मुझे तेज ही रहने देते. Because they like it when they're in their fast phase, when they're manic, because they can accomplish things, they can work, they can do things, and they feel better. They feel more energetic and more cheerful. But bipolar depression is a real challenge to treat. Multiple उसमें options available हैं, अब options बढ़ गई हैं compared to before. But maintaining that mood which is not manic and not depressed it can be a challenge, and even for psychiatrists these are very challenging conditions to treat, and bipolar depression is particularly उसमें जैसा पहले bullet point आपको बता रहा है कि it's usually more severe, the episodes can sometimes last longer, and because it's part of a bipolar type illness, these people have trouble with impulse control and can attempt and complete suicide more often than people with unipolar depression. नीचे कुछ टिप्स लिखी, बहुत सारी चीजें हैं. So there lot इस पे काम बहुत सारा हुआ है. There are lots of research that talks about what you can do in order to treat bipolar depression. I personally think that if you're treating a person with diagnosed bipolar disorder and they are depressed and you've tried one or two things, it's always a good idea to get some input from your mental health colleague because it's a very complex condition. हमें भी problem होती है. Even psychiatrists have difficulty maintaining remission from depression in people with bipolar disorder. So it's a good idea to get on the phone or आपके जो कोई colleagues हैं या कोई लोग हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं psychiatric community के, तो जरूर उनका आप input ले लें. But there's some ideas, I think. Can we have the next slide? There might be some other strategies also. So this is talking about कि आप क्या use कर सकते हैं. The last slide talked about quetiapine, adding quetiapine. This one is talking about lamotrigine. ECTs are also a possible, अगर available है आपकी community में. Antidepressant को taper और बंद करने की बात already हो गई है. You may ask कि जी अगर bipolar patient को depression हुआ है उसको आप anti-manic agent दे रहे हैं, why can't we treat them with antidepressants? आपने mania को तो आपने control किया ही हुआ है. And the answer to that is that all the evidence that we've accumulated so far, and there's hundreds and hundreds of research studies, they all say that antidepressants will invariably make the condition worse in the long term. In actual practice होता ही है कि हम कभी कभार short term use तो हम कर लेते हैं antidepressant, but antidepressants are not at all a good idea even in a person who's stabilized on anti-manic agents, because all the studies say कि अगर bipolar disorder है उसमें आप antidepressant देंगे तो cycling worse हो जाएगी, manias worse हो जाएंगे, depression भी worse हो जाएगा in the long term. Short term में एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए उनको relief मिलेगी, लेकिन फिर जब दोबारा वो नीचे होगा तो और ज्यादा severe depression होगा. So it's all this is something that I always try to avoid, is using just straight up antidepressant. और अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस और आ गई हैं which can give a person relatively decent relief, like quetiapine, lamotrigine, जिससे यहाँ पे बात हो रही. Next slide. सर कैन आई कम इन हियर फॉर अ मोमेंट? जी प्लीज. मेरा ख्याल है ये बहुत अहम नुक्ता है सर, और जैसे जो हमारी भी टारगेट ऑडियंस है, फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स, ये बहुत अहम है इनके लिए समझना कि अगर कोई शख्स इनके पास डिप्रेशन की प्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है, सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ थॉरो हिस्ट्री, डू अ मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज अगर ये उसकी, और जैसे कि हमने भी स्लाइड्स में भी देखा था कि इट मे टेक अप टू 5 years फॉर समवन टू बी एबल टू सीक ट्रीटमेंट फॉर दिस बाइपोलर इलनेस, because it might not be so much evident before that. And
and if they're looking at the patient in a mixed state or a depressive state and they prescribe an antidepressant, so it is for sure that the patient would end up in a manic state. So for a family physician, for a GP, it is really important to understand this point that you're making, कि mood stabilizer are the important thing. Keeping the patient from going into mania is also very important, and using these एंटी जो हमारे पास मौजूद हैं, जो मूड स्टेबलाइजर के तौर पर भी काम करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. और एक जीपी और एक फैमिली फिजिशियन इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू मेक श्योर कि द सिचुएशन डजंट एग्रेवेट फॉर द पेशेंट. जी बिल्कुल ठीक Usman, so we already talked about that. So Usman, can I just interrupt and ask, I know we are coming to the end of the seminar, do we should I keep going, या कुछ should we stop at for a few minutes before 5 and have some question answers? Dr. कितनी Huda, how slide many अभी और? slides are remaining? Dr. Sman, still we have 6 slides, a few more on So management and let me run through the slides quickly, and maybe we can save 5 minutes at the end and see if there's any other questions or comments. So can we Sure, have the Doctor. next slide? ये we have already touched on most of these points, and ये मैंने earlier बात कर दी थी that any time that a person comes in, so let's look at it from two perspectives. Number one, anytime someone comes in with a condition that you suspect to be bipolar disorder, and after taking a thorough history, we've already talked about that, how important it is to do an adequate assessment and to make sure that your diagnosis is accurate, and how you need to do some lab monitoring, not excessive lab monitoring, but some minimal basic lab monitoring to rule out medical conditions that may be presenting as bipolar type symptoms. हमने already बात की थी, so hormonal conditions, metabolic conditions, so on. This slide is actually talking about, and we've already touched on this also, that people, before starting people on various different types of medications for bipolar disorder, you should do a basic medical workup, which can be tailored, which can be designed, which can be modified according to which agent you want to use. If you want to use lithium or valproic acid or carbamazepine or antipsychotics, और यहाँ पे वो चीजें बताई जा रही हैं, which are, some basic labs should always be done. So you always want to do a CBC, electrolyte, renal function, liver function test, and thyroid is usually recommended. And then if you're going to start lithium or valproate or carbamazepine or antipsychotic, जो additional जो workup है वो यहाँ पे इस टेबल में आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें आपको initially होनी चाहिए, और फिर what should be the interval at which you should do further ongoing monitoring as a part of that medication treatment, as a part of the medication that they're taking. Next slide. उसी चीज को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है. Women tend to become quite upset if you're treating women patients. I've already talked about valproic acid and the risk of polycystic ovarian disease. All antipsychotic medications, because they affect or because they impact on the dopamine receptor, can raise prolactin, which can affect menstruation. It can cause oligomenorrhea, reduced menstruation, or complete amenorrhea. And this can be very distressing to women and very concerning and bad enough to where they may become non-compliant with medications. This is important that you reassure them. We do this on a regular basis where a young woman we are treating comes to us and says, I'm not having my period. And then I explain to them, it's all right. It's because of your medication. You're doing better. Once I taper the medication, the period will come back. I oftentimes I don't get a prolactin level now. I used to do that because I know that if they've stopped having a period, their prolactin probably is raised. So there's no reason to have them spend extra amount of money, 2,000 rupees. But if you want to check a prolactin, you can. If a person's on an antipsychotic medication, most likely the prolactin will be raised. But that prolactin will come back down to normal once you taper down the medication after they've recovered. बाकी जो चीजें हैं वो जो जहाँ पे इस slide में लिखी हुई है, you can do it on a case-to-case basis. अगर आपने ECG करनी है या ड्रग के प्लाज्मा लेवल्स करने हैं, so that is something that you can decide whether you want to do it and whether that's available or not. So availability का carbamazepine level कहीं available होते हैं कि नहीं होते, cost का issue होता है. So serum levels are quite expensive. So you also want to take that into account. Next slide. So I think this is the last few slides. We're just kind of winding up what we've talked about so far. We want to. The aim of treatment is to help a person preserve a normal, what we call a euthymic mood, a normal mood, a mood with a normal variation,
between happiness and sadness, but not in extreme. Of course, preventing any serious outcomes like suicide, and doing that with whatever treatments we have at our disposal. ये जो number 3 bullet point, उसके further bullet point से वहाँ पे बात हो रही है कि medications का, once a person has recovered from an acute episode, what should be done? So in fact, the data on long-term use of medications or maintenance use of medication in bipolar disorder is not very robust. You know, 1 saal, 2 saal, 5 saal, 10 saal. So the data that I've looked at and the approach I use is I try to ensure that they need to remain in remission from their mood symptoms for at least a year before I encourage them to think about starting tapering a medication. And so I will, if they're having side effect from medication, then we can work on that. If they're having other kind of problem, we can work on that also. But these are relapsing conditions. So अगर आपने दवाइयों को कम करना है, दवाइयों को बंद करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है, over a period of time करना है, remission को maintain करना है, under no circumstances should you allow a relapse of the condition. क्योंकि अगर रिलैप्स होता है, डिप्रेशन दोबारा आता है, मीनिया दोबारा आता है, इट्स अ लॉट ऑफ डिसरप्शन इन अ पर्सन सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, बहुत मुसीबत बनती है. सो दवाइयां भले आप you may want to extend medication extra 2 months, 3 months, 6 months if you can prevent a relapse. And most people, when you explain it to them that way कि जी अगर आप दोबारा बीमार होंगे, आपका कॉलेज इंटरप्ट हो जाएगा, आपका जॉब इंटरप्ट हो जाएगा, घर पे प्रॉब्लम आ जाएगी, then they understand. Of course, if they're having problem with medication, you need to address that, but it's important that the long-term management be done very carefully. They can certainly try to attempt to taper medication and so on and so forth, but the main goal needs to be prevention of relapse. Next slide. ये वही बात हो रही है. बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं. वेलपेक एसिड टू वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये जो NICE, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस ऑफ द यूके, ये उसकी एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन है. ऑल ऑफ दीज आर इन द पब्लिक डोमेन. इनको आप लुकअप कर सकते हैं. अगर नाइस रिकमेंडेशंस को आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी. सो this is the framework which we all follow in terms of the evidence base, and these are regularly updated also with the newest evidence. Next slide. ये उसी चीज को हम रीट्रेट कर रहे हैं जो पहले बात हुई थी. लिथियम इज अ वंडरफुल मेडिकेशन. मैंने पहले बात की है, मिलने का प्रॉब्लम होता है. Then you can combine various different medications with each other. Which medication should you combine with which one? What is first line? What is second line? What is third line? All of these recommendations are available on multiple platforms. NICE की recommendations भी हैं और evidence based guidelines भी हैं. mental health gap भी आपके पास है. So lots and lots of guidance in terms of what पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. So lots and lots of guidance available. Next slide. This is something which is a little bit more specialized, but इसकी भी अब बहुत सारी यानी simple psychotherapeutic interventions बहुत सारी आ गई हैं which can be delivered at the family practice or the primary care level also. So वो most definitely करनी है. They are addressing very simple things. Stigma को कैसे address करना है, relationship issues को कैसे address करना है. It can be very simple. In fact, I saw a question in the comments here which was talking about we want to know more about sleep issues. So there's actually a recommendation for a therapy called social rhythm therapy, जिसमें हम बात करते हैं people with bipolar disorder की कि उनके नींद के साइकिल को कैसे ठीक करना है, उनकी डाइट के साइकिल को कैसे ठीक करना है, एक्सरसाइज कैसे ठीक करना है. So there are lots and lots of evidence-based recommendations which you can give to people either face to face or you can have booklets. अब तो online resources आ गई हैं, बहुत सारी apps आ गई हैं. And of course, formal psychotherapy is always an option. जाहिर है psychotherapy अगर आपने psychologist के साथ करवानी है तो resources available होनी चाहिए आपकी community में. But there are lots of evidence-based recommendations now, psychotherapeutic recommendations, psychological recommendations, which can be delivered in your family practice setting, even by people who are not specialized mental health professionals. Next slide. So ये थोड़ी सी यहाँ पे वो बात उसकी कर रहे हैं ऑलरेडी कि क्या recommendations हैं, किस तरह से की जा सकती है. जो लास्ट बुलेट पॉइंट है, इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि ये चीज पाकिस्तान में शुरू होनी चाहिए, बिकॉज इज समथिंग दैट वी रूटीनली डिड व्हेन आई वर्कड इन द यूएस, एंड we were only participants. So patients and their families themselves formed various different groups, support groups, जिसमें so you could have a support group of parents of people with bipolar disorder.
or children or patient themselves, or children of people or spouses of people with bipolar disorder. So basically these groups, and the groups can be facilitated, led by either a mental health person, or they can be led even by somebody who suffered from the illness. The idea is only to sit together, provide each other emotional support, share information, give each other resources. तो इतना यहाँ पे स्कोप है हमारी कम्युनिटीज में, हमारे पाकिस्तान में इस चीज का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन बहुत सारा काम इस पे होने वाला है. सपोर्ट ग्रुप्स for example, for dementia, support groups for depression, all kinds of mental health conditions require support groups, and not just that, but hypertension, diabetes, all medical conditions also, cancer support group, breast cancer support groups, बहुत सारा इस पे काम होने वाला है, which have been found, and there's lots and lots of evidence, lots and lots of data on this about how useful these kinds of activities can be in multiple different ways. Next slide. इस पे थोड़ी सी बात हो गई है, so I mean I won't go through that. ये भी mental health gap में से है. So if you take a look at the mental health gap app, or if you take a look at the text, वो mental health gap is in the public domain, so आपको नेट पे मिल सकता है, उसकी ऐप भी मौजूद है. Next slide. I think we've covered most of this, so let's skip that. Next slide. Okay, good. So this was the last slide. I think we have, we are almost all out of time, but Sir, we have 3 more slides on follow. Do you want to quickly go through that also? Then we can come to the question answer sections. There are only 3 slides. I think I let Dr. Usman, मेरी आवाज तक गई. I let Dr. Usman go through this. Usman, is that okay? Can you do that? जी सर, नो वरीज. Please go ahead. मेरा ख्याल है सर ने काफ़ी तफसील से ना की इश्यूज को आइडेंटिफाई कर दिया, और बाकी तमाम मेंटल हेल्थ कंडीशंस की तरह जब आप फॉलो अप करते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि अभी इस पेशेंट की सिचुएशन क्या है, इज़ द पेशेंट इम्प्रूविंग. अगर जवाब है येस, तो जाहिर है आप उसको कंटिन्यू करेंगे उसकी मेंटेनेंस मेडिकेशंस के साथ फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. अगर ठीक नहीं हो रहा तो जाहिर है दूसरा सवाल ये आता है कि क्या वो दवाइयाँ ले रहे हैं. अगर वो दवाइयाँ ठीक तरह नहीं ले रहे तो जाहिर है आप दवाइयों को रिव्यू करेंगे. अब अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या उनकी डोज ठीक है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, अब आप उसको रिव्यू करेंगे. और अगर आपको पता चला कि डोज ठीक नहीं ले रहे थे तो आप उसकी डोज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और दोबारा 4 से 6 हफ्ते में उसका दोबारा फ़ॉलो-अप शेड्यूल करेंगे. और इसी तरह अगर कोई उसको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे तो आप उसको देखेंगे कि आपने उनको कैसे मैनेज करना है और स्विच करना है. और साथ ही साथ आप उसको साइको सोशल इंटरवेंशन या सपोर्ट या मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी एवेलुएट करेंगे जो उसकी मेन प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करे हो सकते हैं. नेक्स्ट. दूसरी चीज़ क्या है, आपने असेस कर लिया फॉलोअप में, उसके बाद आपने मॉनिटर उनको रूटीनली करना है. जैसा कि आपने देखा कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में एक तो कंडीशन अपनी इतनी ज़्यादा वैक्सिंग एंड वेनिंग है, उसमें इतने जो हैं वो साइनोसाइडल सा कर्व है, तो उसको आपको वैसे रेगुलर मॉनिटर करना होगा. दूसरा, उसका जो इम्पैक्ट होगा पेशेंट की पर्सनल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, ऑक्यूपेशनल लाइफ पे, आपको लोगों को साइको एजुकेट करना होगा उसके लिहाज से. तीसरा, जो वो दवाइयाँ ले रहे हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपने उस तमाम चीज़ों को देखना होगा. फॉर एग्जांपल वेलप्रोएट का, जैसे डॉक्टर अली ने बताया अभी आपको, कि वो आपको चाइल्ड बियरिंग एज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसलिए क्योंकि वो नॉन टेराटोजन है. लेकिन अगर आप कार्बामेज़ेपिन दे रहे हैं तो जाहिर है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. तो यू हैव टू मॉनिटर फॉर एडहेरेंस, साइड इफ़ेक्ट और डोज. और अगर उस दौरान वो कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप करते हैं और वो कुछ दूसरी कंकरेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं, या वो हाइपोथायराइड हैं और उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जाहिर है यू हैव टू लुक फॉर दोज एज वेल. अच्छा, अब अगर तीसरी बात कि अगर पेशेंट फुल रिमिशन में है और कोई सिम्टम्स नहीं आए उसको 2 सालों के लिए, तब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं उसकी टेपरिंग ऑफ करना मेडिकेशंस को. लेकिन दिस विल बी फॉलोड विद वेरी क्लोज मॉनिटरिंग, फॉलो अप, साइको एजुकेशन, और ओवर द वीक्स और मंथ्स आपको इसको टेपर ऑफ करेंगे. और अगर आपको लगता है कि वो मेडिकेशन तो ले रहे हैं, टाइम हो गया लेकिन अभी वो फुल रिमिशन में नहीं आए, तो यू हैव टू कंटिन्यू टू फॉलो अप एंड मॉनिटर. नेक्स्ट. अगेन, जो वुमेन हैं प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपने देखा है बहुत दफ़ा ये बता दिया कि वेलप्रोएट और को आपने डेफिनेटली अवॉइड करना है इस केस के अंदर. आप इनमें हेलोपेरिडोल लो डोज यूज़ कर सकते हैं, अगेन विद अ स्पेशलिस्ट. एक और चीज़ जो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जब हम आपको इस तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप एज अ साइकाइट्रिस्ट और ए स्पेशलिस्ट ये तमाम चीज़ों को केटर फॉर कर लेंगे, बल्कि एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको ये चीज़ें पता होंगी और आपको इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन का और इन चीज़ों के कॉम्प्लिकेट होने का आइडिया होगा,
और आप किसी साइकाइट्रिस्ट के साथ इन लेजॉन इनको देख रहे होंगे, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली वेल बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ जनरल फिजिशियन ओनली टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग. सो इस तरह की, और ख़ास तौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर में जहाँ थिंग्स कैन गो इन एनी डायरेक्शन एट एनी टाइम, it's important that you work with the specialist to monitor these things. Next. We are open to Q&A now. Dr. Huda, आप questions बोल सकती हैं and Dr. Ali can respond to them. जी श्योर डॉक्टर उस्मान. Dr. Ali, there is one question. There is one question from one anonymous attendee, and he's asking that if the patient is in manic psychotic phase, it can be misdiagnosed as schizophrenia. So I think you answered this was before also. You said it can be misdiagnosed also. Yeah. Dr. Javed wants to know that can you give us your expert opinion regarding first generation and second generation antipsychotics? Adults have has psychotic symptoms. Which one is better? And can they use procyclidine for long term to avoid extrapyramidal symptoms also? Thank you. So, so the first generation antipsychotics are, of course, the prototypical medication is haloperidol, but we have other ones like flufenazine and other medication. They're distinguished by their pharmacological profile, which is the effect primarily is on the dopamine receptors, specifically the dopamine 2 receptors, and very strong affinity for that particular receptor. Second generation antipsychotics, the first one that came out back in 1994 when I was in training in the US was risperidone. And then we have olanzapine, quetiapine, and aripiprazole, and these are all available in Pakistan. It used to be back in the late 90s and the early to mid 2000s. There was a strong move, at least partially fueled by the pharmaceutical companies, to move everybody, all doctors, towards the side of the second generation or newer, they're not new anymore, antipsychotics. And the idea was that because the older antipsychotics tend to cause more extrapyramidal symptoms and potentially, possibly more long-term side effects like tardive dyskinesia, long-term movement disorders. Therefore, all patients should be shifted to second generation antipsychotics. We know now, it is now 10, 15 years later, that second generation antipsychotics have their own very significant burden of side effects, and primarily among those is weight gain and metabolic syndrome, which can lead to significant medical complications like diabetes, like hypertension, things of that sort. So, so ab thoda sa is coming back towards a more balanced view, which is that second generation antipsychotics tend to have some advantages over the first generation antipsychotics, but the first generation antipsychotics still have significant usefulness. And for instance, two significant real world advantages that second generation or first generation antipsychotics have, haloperidol and flufenazine and some of those, in a country like Pakistan. Number one, they are extremely cheap compared to second generation antipsychotics. So agar aap compare kare the cost of haloperidol to the cost of olanzapine, we are talking about perhaps 5 to 10 times less, 5 to 10 times less. So, a few rupees a pill for haloperidol, 20, 30 rupees a pill for olanzapine. Now, this may not sound like much to people like us, but for a very large percentage of the population of a country like Pakistan, a treatment that is cheaper can mean the difference between being able to take treatment and being able to buy their groceries or pay their rent, right? So that's not a small consideration. The second part I've already mentioned earlier, which is that the first generation antipsychotics, haloperidol, flufenazine, some other ones, are available in Pakistan in long-term injectable form.
which can be given once every 2 weeks or even once a month, which is a significant advantage in certain kinds of patients for various reasons. We won't go into that because it's not today's topic. But long-term injectable medications are available in the first generation. We still don't have any long-term injectable second generation antipsychotics. So प्रोसाइक्लिडीन का इन्होंने जावेद साहब ने बात की. So procyclidine is very useful, and oftentimes we will use procyclidine at least for the relative long term, for a few months, even for longer than that, for extrapyramidal side effects, and it's okay, it's perfectly safe, there's no problem there. They have their own side effects. The anticholinergics like procyclidine, dry mouth hota hai, other side effects hote hain. But as the person improves and recovers and you taper down the dose of medication, you can also taper down the dose of the procyclidine. So it should be perfectly safe to use. In general, you don't need to use procyclidine for long term for second generation antipsychotic like risperidone. लेकिन अगर आपको treatment naive patient है, a patient who has not been exposed to antipsychotic before, usually what I will do is I will add something like an anticholinergic like procyclidine, at least initially, ताकि वो जो acute EPS है, dystonia and all of those things, which can be very scary and very distressing for patients. To avoid that, I'll do that. But if you're using an older antipsychotic like haloperidol, then most likely you do want to use procyclidine or an anticholinergic along with that. Thank you. Thank you so much, sir. Dr. Ali. Dr. Huda, I know that Dr. Ali has to go now. So I would like to thank you, sir. और in terms of the next step, sir, मैं आपको भी on board लेना चाहता था इस हवाले से. So what we are planning now is कि हम इन candidates को groups में divide कर देंगे और फिर ना हम एक इनकी weekly supervision meeting रखेंगे जहाँ they will bring in some case studies from their practice, and we can and you can actually help them think through the different management aspects for key issues such as anxiety, depression, psychosis, and bipolar disorder, self-harm kind of things, which we think can be managed in primary care, or what would be the role of a primary care physician in the management of such cases. So that is what we are anticipating, inshallah, by the end of this month. And that is how we think we can take this forward, because this is for the first time that we are launching such course. So we are also going to learn from the experience on like how much teaching is important and how much practicum is going to help them with. But that's the next step really, sir, from going from here. But I want to thank you for your Thank time. you, Usman. It's an excellent idea. Let me appreciate you and let me appreciate your team and all the hard work you're putting in, because I already managed talk अपनी start ही यहाँ से की थी. This is the way to go for the future. We will never have enough psychiatrists. We will never have enough psychologists. We have to train our primary care colleagues, our family doctors, other healthcare providers to initially treat these mental health conditions. So thank you so much, and thank you to Shifa University. And of course, most of all, thank you to all of our participants who've taken the time out on Saturday evening. Thank you very much, and I look forward to continuing to work with you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir. I know that there are many questions that are still there. आप में से कुछ questions के answers I can see कि they are in the slides. Pregnancy के हवाले से और इसी तरह acute management of mania के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं. I've also noted down कि sleep disturbance has been highlighted again as one key thing. So we can continue to host seminars on these things. Another thing that I wanted was कि आप लोग अपना comment कर सकते हैं कि we are planning the last week of December we do an in-person seminar. So I will be in Pakistan as well. So we can actually host a seminar in Islamabad or Rawalpindi में. Islamabad में शिफा में ही हम host कर सकते हैं. Dr. Huda will reach out to you all, and we can see how many of you would be keen and interested, and how useful you think such an exercise would be to do an in-person seminar, जो most likely हमारा last concluding seminar होगा. So Dr. Huda will reach out to you. Please do let us know. And in the meantime, please also fill in your clinical practice rotation और वो सारी तमाम चीज़ें, ताकि हम उसको भी देख सकें और उससे फिर हम आगे लेके जा सकें. So that is all from me. We'll see कि अगर हम आप में से कुछ questions अगर फिर भी आपके हैं outstanding, तो please after looking at the slides and the lecture, तो please do send them in, and in the next seminar उसके शुरू करने से पहले हम इन क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस कर लेंगे, या रीकैप में आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं कि आपके कोई आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस हो लास्ट सेमिनार से. सो वी कैन डू इट लाइक दैट. आई हैव नोटेड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कराची इन पर्सन सेमिनार के लिए.
जी बिल्कुल डॉक्टर शानीला, ये वीकेंड के ऊपर ही होगा इस्लामाबाद में इन पर्सन सेमिनार. So that is all from me. Back to you, Dr. Huda. Thank you so much, Dr. Usman. So this brings an end to our seminar now, and I would like to thank Dr. Usman also, जिन्होंने बड़ा अच्छा bipolar assessment और management startup from the common presentations और assessment पे बात की. उसके बाद डॉक्टर अली ने management और follow up को लेके बड़ा comprehensive तरीके से आप लोगों को explain किया. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. और वही बात डॉक्टर उस्मान की कि जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, प्लीज़ रेफर टू दी प्रेजेंटेशन दैट वी विल बी शेयरिंग विद इन नेक्स्ट 10-15 minutes. एंड इफ स्टिल देर इज सम क्वेरी, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन द गूगल क्लासरूम and we'll try to address this in the start of the next seminar. So it's quiz time, or please try to complete your quiz within time, जो आपका allocated time है, that is 1 p.m. tomorrow, Sunday. एंड सेम गोज फॉर द फीडबैक ऑल्सो, जिसके बारे में स्टार्ट में बहुत एम्फोसाइज किया था और नाउ एंड में भी, क्योंकि इसकी नंबर्स बहुत कम होते जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के. एंड फीडबैक इज इक्वली इंपॉर्टेंट and it has a good weightage in the end of the terminal examination also. So thank you all of you for being such a good participants and doctors की आप बड़ी अच्छी communication हुई, आपके questions timely address हुए, आप लोगों ने अपनी feedback दी, कुछ cases भी start में discuss किए डॉक्टर उस्मान से. So thank you all of you. So have a happy Sunday. Inshallah, see you soon next week. Thank you.